Hi guys, good morning. Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning, Mm. sir. Morning, sir. So, guys, today the market is off. Okay, on account of Eid. But if I talk about the news today, so major news in the newspapers was about the electric vehicles. Now, if you see overall, many of you have written it. So, Chaitanya, I would like you to go first, but let me explain a bit. So in this news, basically what is written is that the EV shares in India is just at 4%. Acha, now this is number as on FY26. Okay. Now this number is have increased to around 6%. वो कल ही था न्यूज आई थिंक एक दो दिन पहले ही था that this month क्योंकि अप्रैल के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं अप्रैल मई में अप्रोक्सीमेट ये 6 to 7% तक बढ़ चुका है आई थिंक रिसेंटली दो तीन अपने मॉर्निंग कॉल में ही होगा now in that so the electric share is increasing. इसमें India में Tata Motors and Mahindra accounts for almost 60% of the shares. So and in selling around, which sold around 1,65,000 vehicles. अभी मैं तुमको ना इसमें से पूछूं, if I ask you that अभी total vehicles कितने sell हुए थे? 1,65,000 which accounts 60% of the share of Mahindra and Tata Motors. तो अगर if I just want to do a calculation कि total EVs India में कितने बेचे थे, so what I do is 1,65,000 divided by 0.6 यानी 60%. तो अप्रोक्सीमेट 2,75,000 कार्स इंडिया में बिके थे करेक्ट. तो ये उसका पर्सपेक्टिव होता है कि यू नो दैट 2,75,000 कार्स इंडिया में बिके हैं. तो अभी डिवाइड बाय मंथ, अगर हम डिवाइड बाय 2,75,000 डिवाइड बाय 12 करते हैं तो इंडिया में अप्रोक्सीमेट 23,000 के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकती है राइट. इन ये पैसेंजर व्हीकल्स है, नॉट द टू व्हीलर्स. ये पैसेंजर व्हीकल्स की बात होती है कि टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा पैसेंजर हमको पता है टू व्हीलर्स नहीं बिकते, वो फोर व्हीलर्स ही बिकते हैं. सो इंडिया इज ग्रोइंग ग्लोबल. अगर इफ आई टेक अबाउट द पॉपुलेशन सॉरी ग्लोबल नंबर है तो 25% के आसपास कुछ ऐसी. हाँ, द ग्लोबल इज अराउंड 25%. 97% नॉर्वे इलेक्ट्रिक कार सेल्स. तो ये 90% 97% कार नॉर्वे में अभी जो है वो इलेक्ट्रिक नहीं है. द न्यू सेल्स इज ऑफ इलेक्ट्रिक, ये याद रखो. सेम वे चाइना इज एट 53 एंड यूएस तो अभी तक 10 पे ही है. कि हम बात करते हैं इतना यूएस की, यूएस इज जस्ट 10% एंड इंडिया तो 4% पे. तो यस, दिस इज गोना इंक्रीज. वन ऑफ द रीजन आई एम नॉट बुलिश ऑन द फोर व्हीलर्स सेक्टर यहाँ पे, फोर व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर इज जस्ट बिकॉज यूएस ही 10% पे. यूएस इज वे मोर अहेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर देन इन इंडिया करेक्ट. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे भी अच्छा है. इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, तो इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. बट यस, फोर का अगर 7 भी हो जाए, 8 भी हो जाए तो ये टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा विल ग्रो. कंपटीशन है. वो विनफास्ट से कंपटीशन है. विनफास्ट का कल ही एक न्यूज था, मेरे को आर्टिकल में आया था दैट विनफास्ट इज प्लानिंग टू लॉन्च सम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. तो ओला को इम्पैक्ट होगा, मतलब वो फ्लीट सेगमेंट में दे आर प्लानिंग टू लॉन्च. तो ये दिन विनफास्ट का न्यूज में था तो मुझे आया, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस वन ऑफ द न्यूज. और यहाँ पे भी अभी द रीजन आई एम बुलिश ऑन द टू व्हीलर इलेक्ट्रिक ईवीज, नॉट द पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक ईवीज. Ola Electric secures node for commercial e-scooter launch. A secure regulatory approval for the newer electric at India's commercial mobility. And I'm not sure what is this exactly. The two-wheeler EV segment are early as. तो ये if you read this, two-wheelers EV is उनका भी कुछ I think two-wheeler EV का 9% penetration है कुछ इंडिया में. That is expected to grow. Two-wheeler electric vehicles. And इसमें हमको पता है स्कूटर्स ही है, टू व्हीलर्स बाइक्स बहुत कम है इंडिया में. So this is what I feel on the electric part. So Chaitali and Niranjan are on the same news. Chaitali, will you start presenting this? Chaitali, you there? Sir, I have written about real estate sector. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Niranjan, बताओ. Oh, sorry. Yeah, Niranjan, go ahead. Yes, sir. Just a minute, sir. Yes, sir. Sir, I have written about EV sector. Only 4% of new cars sold in India were EVs compared to 25% global sales. EV accounted to 25% of all new cars sold globally in 2025, translating
to 20 million cars sold worldwide, including BEVs and PHEVs. Electric cars sales across 10% threshold in 23 countries. Norway is leading the global index at 97%. Nepal hits 68%. China reaches 53% market share. Vietnam hits 41%. Thailand hits 23%. India's penetration is quite low than the government expectations of 30%. India recorded only 4% shares of all new car sales in 2025, whereas government target is to reach 30% by 2030. Just two players, Tata Motors and Mahindra accounted of 60% of 165,000 electric cars sold in last year. The major reason is charging infra is the major reason behind the lack. Out of the global stock of 7 million public charging points, India processed only 88,000 points. Out China single-handedly controls 65% of world public charging points. Only 55% of Indian EV owners have home charging facilities compared to 80 to 90% in countries like Norway, Switzerland, and United States. कितना कितना इंडिया में, सॉरी? 55% means 55%. household charging points are 55%. Okay. And Norway, Switzerland, US में 80 to 90% से. Okay. Yeah, this Good. means major reason is charging infra. हाँ, तो conclude the article. Conclude कैसे The करोगे? means I am bullish on this because the target on Tata Motors and Mahindra, because the government target is to 30% sales, and we are now at only 4% sales. So government will definitely take some actions or change some policies to reach that target or come to nearby that target. Okay. तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसमें? तो ना रिनेशन सर, यू आल्सो हैव टू डू रिसर्च ऑन इतने इंडिया में कितने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम जो बोले ना 50% ही है, तो इंडिया में ओवरऑल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हैं, कितने से ग्रो हो रहा है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ईवी इन इंडिया? ये थोड़ा तुमको जाके भी गूगल करना है, रिसर्च। Yes, sir. Right. वो क्यों नहीं किया तुमने? सिर्फ न्यूज़ लिखना इज नॉट रिसर्च सर। तुमको भी ये जाके रिसर्च करना, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है इस पे, क्या होगा आगे जाके महिंद्रा में इन्वेस्ट करना। हमको पता है, इट्स अ कॉमन सेंस क्या हो रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है इंडिया में। व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग ऑन इट? तुमको जैसे मैंने तुमको बोला कि आई एम नॉट बुलिश ऑन इट, तुमको बोलना कि नहीं सर आई एम, जैसे तुमने बोल रहा हो कि आई एम बुलिश ऑन इट, तो यू हैव टू क्रॉस मी सर। अब बोल तो रहे ठीक है, बट दिस इज माई माई थॉट्स ऑन इट। यू आर बुलिश, तो मैं तो फर्स्ट ही क्वेश्चन आएगा ना निरंजन तुमको कि बुलिश कैसे हो सकता है, इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो यूएस में है। तो यूएस में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, इंडिया में कितना है Yeah, सर? sir, I will research on it also. यू हैव टू क्रॉस मी। मैं कुछ भी बोलूँ, इवन इफ आई सेइंग एथर इज गुड, तुमको पता ना कि एथर इज व्हाई इट इज नॉट गुड, बिकॉज आई विल, वरना यू डोंट टेल मी, आई विल टेल यू देन। नहीं, तुम Yeah, जो बोल रहे हो गलत है, क्योंकि एट द एंड मेरा पर्सपेक्टिव तुमको यही बोलना होगा। इट डजंट मीन दैट आई एम डीमोटिवेटिंग यू, या तुम बोल रहे हो गलत है। यू हैव टू डिफेंड योर थीसिस। ये है पर्सपेक्टिव। yes. Sir, and about the Ola, you talk about the Ola. The Ola was 4.4% up yesterday due to Okay. they got the approval of this commercial EVs. हाँ, क्या है, पढ़ा क्या ईवीज के बारे में? मैंने नहीं पढ़ा, व्हाट इज दैट कमर्शियल ईवीज? नहीं सर, ये रिपोर्ट बना रहा था मैं, मतलब डेली मार्केट रिपोर्ट. सो आई एम नॉट गेटिंग हाउ टू प्रेजेंट दिस मीन्स एवरी डे, मीन्स हाउ हाँ, टू तो मेक. तुमको सिर्फ उतना ही बोलना, जैसे तुमने आज बोला ना कि ओला ऊपर पर है, उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके देन बाकियों का भी बोलो क्या, मतलब इतना रिसर्च नहीं किया पर रीजंस पता है कि हाँ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स वाज अप बाय almost 4%, 3.98%. हाँ The reason can be that investors are
means positively responding to the premium demand and SUV shift. करेक्ट। Then क्योंकि second, हर दिन uh, तुमको नहीं आएगा इतना। okay. Then Bajaj Auto was up by 2%. The major reason was because it was the last day that investors can buy shares to qualify for 150 rupees per share dividend. Yeah, Hero Motors was up by 1.85% as they launched new model of Super Splendor XTEC 2.0 yesterday. Okay. Okay. TVS was down by 2% as the market is responding Q4 results where the net profits were down by 8% in Q4. रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट तो आ गया। सो नाउ अगर इमीडिएट को रिजल्ट नंबर नहीं तो मतलब नहीं है बोलने का, ठीक है। Okay. ऐसा है, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइम हो गया ना, उसको रिजल्ट तो कब का आ चुका है उसका। Okay. Okay, thanks. ओके, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? आदित्य, Yeah, sir. क्या क्या आदित्य? Sir, I have a question in first article. ओके, सर बेसिकली नॉर्वे एंड नेपाल ने जो मार्केट शेयर कवर करा है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये वन टाइम है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वहाँ पे ऑयल प्राइस हाइक हुआ है बहुत ज्यादा, ये वेस्ट एशिया वो वेस्ट क्राइसिस को लेके। बाहर जाना है तो बाहर का सोचो भी मत, तुमको क्या करना है? तुमको क्या नहीं, करना है क्योंकि नेपाल में बेसिकली इतना नेपाल रिसोर्स? अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, वो इंपोर्ट करता है BYD और MG मोटर और नेटा से। तो उनको एक अच्छा वो, और चाइनीज कंपनी को भी एक अच्छा वो मिल गया कि मार्केट कैप्चर करने के लिए। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मतलब कि वन टाइम है शिफ्ट ऐसा। तो उससे तुम्हारा तो क्यों सोच रहे हो तुम? ये तो सोच भी रहे थे, तो उससे तुम्हारा क्या फायदा है? ये बता रही मुझे, सोच रहे थे, थोड़ा सोच भी रहे थे, नहीं, अगर क्या हम होगा? कंपैरेटिवली देखें तो हमारा फोर कितना परसेंट मार्केट कंपेयर? शेयर तो कैसा वो डाउन दिखता है, बट रीजन इज कि हमारे पास हमने इतने प्राइस हाइक करे नहीं थे जितना और कंट्रीज में हो रखे हैं ऑयल प्राइस हाइक। नहीं, देयर इज नो कंपैरिजन। तुम यूएस कंपैरिजन ओके ही नहीं, मैंने क्या कंपेयर किया? मैंने देखो, जब मैंने यूएस का बोला, मैंने इलेक्ट्रिक कंपेयर किया, क्या मैंने क्या कंपेयर किया? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके ओके। तो कंपैरिजन है ही नहीं कि यूएस, तुम इंडिया का सैलरी या यूएस का सैलरी कंपेयर कर सकते हो? बोलते यूएस में मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ और इंडिया में 10 लाख ही कमा रहा हूँ, कंपैरिजन है? या फिर इंडिया में 1 करोड़ कमाना और यूएस में 1 करोड़ कमाना, कितना फर्क है? तो कंपैरिजन तो है ही नहीं। करना भी नहीं चाहिए कंट्रीज में कंपैरिजन। यू कैनॉट से कि ग्लोबली 25% तो इंडिया में भी होगा। तो इंडिया में क्यों क्यों ग्लोबली है 25%? तो वही था, मैंने क्या बोला निरंजन को, तुम ये ढूंढो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में क्यों बढ़ेगा। जो 4 का, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4 का 6 होगा, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी होगा ना। वहां थोड़ी कि यूएस में हो गया तो इंडिया में भी हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट। ओके सर। वो ओके सिर्फ नंबर था, डेटा सर, पॉइंट था कि योर यूएस में स्क्रीन इतना इज है ऐसा। सॉरी, माय साइड। सॉरी, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल फ्रॉम माय साइड। भाई इज इट It's visible, sir. दिख रहा है ना? तो मेरे को Blank चेंज नहीं है क्या? background. अच्छा, नहीं ये तो दिख रहा है। Visible, sir. It's visible. It is visible, sir. क्या अभी आया? मैंने पॉज किया था स्क्रीन। ओके, नो ये सर। आदित्य क्या बात है? नहीं, मेरे कुछ दिखा नहीं रहा वैसे, स्क्रीन तो एम्प्टी है, कुछ में दिखा नहीं रहा स्क्रीन पे। Yeah, sir. Hello. या आदित्य। So my news is on Mint page number 09. इट्स नॉट अ न्यूज नाउ, इट्स एन एनालिसिस, ओके, बाटा का। हाँ, बाटा का। हाँ, तो इट्स नॉट अ न्यूज, इट्स एन एनालिसिस। You have to tell me, sir, it's not a news. I'm not presenting a news. I'm presenting some update. So there's a difference. Okay. Okay. Go ahead. Okay, sir. So Bata India Q4 profits fall 95% year on year to 2 CR despite revenue growth of 5%. So firstly update, revenue growth driven by higher volume. Bata India reported Q4 financial year 2026 revenue of 828 CR, up 5% year on year, supported by volume-led demand recovery. So the One second. One company, second. You don't say CR. It's either millions or billions. You can say 8.2 billion. okay, Okay. 8.28 million. 8.2. One decimal. Sorry. One decimal.
So the company stated that the March sales performance was stronger than January, marking the second consecutive quarter of accelerating top line growth. Bata continues on improving sales momentum across footwear category. So the major loss was due to VRS and Forest loss at profitability. So Bata consolidated net profit plunged 95% year on year, impacted by a 28 million VRS charge and a 22 million Forex related accounting loss. So sequentially, profit declined 97% quarter on quarter basis. So the company has implemented VRS scheme across manufacturing unit and shared certain facilities in Rentier to improve long-term operational efficiency. So I would like to conclude by saying that revenue recovery visible, margins under pressure, Bata revenue growth trends indicate that improving consumer demand and stronger sales momentum. But however, exceptional cost and forex related losses continue pressuring profitability in the near term. So future revenue growth will depend on sustaining volume recovery and marginalized normalization across operations. Thank you. So your view, why should I buy the stock? Is it better? What is the future of it? प्रॉफिट तो हो चुका है, तो ऑलवेज इट्स अ फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट आदित्य। मुझे अपडेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मैंने भी पढ़ा है, तुमने जो बोला है वो, तुमने क्या एनालिसिस किया इस पे? You saw the way I told EVs, the way I concluded it, why I don't like Ather, sorry, why I don't like Tata Motors and Mahindra, फोर व्हीलर्स पे मेरा क्यों प्रोसेस नहीं है। तो तुमने जब बाटा पे कल भी आया था न्यूज, हमने बताया रेड टेप ऊपर था, 10%, 11% ऊपर था। हाँ, हमने फिर बात की वो ओजन और और कोई स्टॉक ऊपर था। तो ये तुमको थोड़ा बहुत बैक एंड पे रिसर्च करके आना है, बिकॉज द वे यू टोल्ड द न्यूज, वो कोई भी एक बच्चा भी बता सकता है ना। तुमने क्या अलग बताया? जो लिखा था वही पढ़ के बताया। तो डू यू थिंक आई विल पे यू 15 lakhs टू रीड द न्यूज? नहीं ना। तो अगर न्यूज नहीं है, अपडेट है, तो यस यू हैव टू कंक्लूड व्हाट डू यू थिंक वॉल्यूम लेड ग्रोथ क्यों हुआ है, क्या वॉल्यूम लेड ग्रोथ हुआ है। 4.9% वॉल्यूम लेड ग्रोथ है, तो व्हाई इट इज, कौन से प्रोडक्ट में उसके ग्रोथ हुआ है। बाटा तुमको पता है शूज बनाता है, सबको पता है क्या हो रहा है बाटा में है, मेट्रो में क्या हो रहा है। why only Bata is growing, या why the overall shoe sector is growing in India, फुटवेयर सेक्टर में क्या हो रहा है। तो इट्स योर perspective। तो अभी एआई को पूछ लो, तुमको गूगल करने की जरूरत नहीं, व्हाट इज हैपनिंग इन फुटवेयर इन इंडिया, व्हाई वाज द वॉल्यूम ऑफ 4.9%, व्हाट लेड टू द पोस्ट, व्हाट लेड द ग्रोथ इन बाटा। कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुआ रहेगा, एआई को पूछ लो क्या हुआ था कॉन्फ्रेंस कॉल में, व्हाट हाउ डज द फ्यूचर लुक लाइक फॉर बाटा। क्योंकि योर आंसर शुड ऑलवेज बी फ्रॉम अ फ्यूचर परस्पेक्टिव। हम न्यूज इसके लिए पढ़ते हैं ताकि फ्यूचर में क्या हो उसका पता चले, या पास्ट में कुछ डेटा पॉइंट मिला है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं है। ये सब जो डेटा पॉइंट सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। तो मेरा बड़ा टीम है, मुझे तो उसने कल ही सब कुछ बता दिया है, तो तुम मुझे आज अलग क्या बता रहे हो। तो सोचो इफ यू आर माई क्लाइंट, ठीक है, अगर तुम मेरे क्लाइंट होते, तुम सुबह उठ के मुझे सर न्यूज बता रहे हो कि सर मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, तो मैं ये सुनूंगा? नो। नहीं, शायद तुम भी सोचो ना, मेरा एक टीम है, मैं खुद 10 साल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, तुम मेरे क्लाइंट हो, तुमको मुझसे रेवेन्यू जनरेट करना है, तुम ये बताओगे? नो सर। नहीं, हाँ। तो वो सी द प्रोसेस ऑफ हाउ थॉट प्रोसेस शुड वर्क लाइक। ओके, तो बेसिकली मतलब और क्या ऐड ऑन करना चाहिए लाइक इन प्रेजेंटेशन? तुम्हारा रिसर्च करो ना, बेसिक रिसर्च की। ये 4 पॉइंट अभी तुमने बोला बाटा पोर्टर पोस्टर वॉल्यूम ग्रोथ 4.9%, तो क्या वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, प्रीमियम में हुआ है, मास में हुआ है, क्या रीजन है उसके वॉल्यूम ग्रोथ ग्रो होने के। ओके। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ एक्सेलरेट टॉप लाइन क्यों हुआ है, तुमने लास्ट क्वार्टर देखा है? क्या हुआ था लास्ट ईयर विद मार्च परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्गर देन जनवरी, क्यों हुआ है मार्च परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्गर देन जनवरी। कैन आस्क, ये बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे पास आने चाहिए तुम्हारे दिमाग में, कि क्यों हुआ, क्या हुआ था ऐसा जनवरी में जो मार्च में हुआ है। ओके सर। ओके गॉट इट। गॉट ठीक है, सर। ठीक है, ऐसा। ओके, now ऋषिकेश। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, my news is about
JSW Steel Limited. Okay, go ahead. Yes, sir. JSW Steel commences work on rupees 65,000 crore Asia Steel plant. JSW Steel announced the commencement of its greenfield integrated steel plant at Pradeep, Odisha. The project involves an investment of 65,000 crore, making it one of the largest investments. The plant will be developed in phases with a planned production capacity of 13.2 million tons per annum. Spread across nearly 2,950 acres, the project is located on Odisha's coastline, offering strong port connectivity and efficient access to the raw materials and logistic infrastructures. The project is expected to strengthen JSW's domestic and international market presence while improving operational efficiency. JSW stated that the project aligns with its long-term growth strategy and India's rising steel manufacturing potential. And sir, we should buy this stock because No, buy any. Only how will the revenue grow? Yes, you don't have to say buy or sell. okay, some of the key points are like their market capitalization 3.2 lakh crore. The market capitalization is of JSW, and around 35 plus million tons annually after expansion. They expand their production capacity is around 35 plus million tons, and overall revenue is 1.17 lakh crore annually, according to the recent FY26. Also, its net profit ranges from thousands of crores. Thousands of crore. This is a vague answer. Specify. How much thousands of crore? 10,000 crore, 20,000 crore. You don't have to specify all those things. Okay. First thing, Rishikesh, you presented very well. Fine. Yeah. Now the question was, why did you choose JSW Steel? Because I have told in that tips to writing newsletter is that you should only select things that you are buying. Do you buy steel? No. Then why are you writing on it? Because there is no competition for steel, na? Do you know what is the difference between JSW Steel and Tata Steel? Do you know No. how many types of steels are made? No, sir. Then why are you writing on it? If you don't know, then Google it and find. If you want to talk on this, I will ask you 10 questions on that. Okay, sir. Sir, Okay, I got have it. also written one more news. I hear that. But the question was, this was a good news. You written it very well. That's why I told you to present it. But Yeah. the question is now, why are you presenting this news? Okay. The question comes back. Because you are not tracking the sector. Nor ever now they are, working on plant, they opening this is good news. It is a good general knowledge. Yes, sir. No issues in that. But then, what is the point of telling all those things? Because if this is the analysis that they have come in 60%, so everyone knows that this is they will do the sales will increase because they have started a steel plant. Yes. Okay. Now you can do a research on it, what is happening in the steel industry there. Why are they, investing so much? You mentioned somewhere long-term growth strategy. Yeah. Now why? But what is steel is used for the economy, right? For the country. Yes, sir. So now what is happening in the country? Why steel is required so much? Where is the majority of the steel is required in India? So ये सब डेटा हमको नहीं पता ना, ये हमको पता भी नहीं चलेगा. Yes, तो sir. बहुत तो for understanding steel sector you have to understand the Indian economy. कि इंडिया में स्टील लगता किधर है? That is a very huge research to do. Yes, sir. So why to do on that research? So always write news on the products that you use or that you see people who are using it. Okay, sir. Okay, got it. Yeah. It should be a B2C. B2C means business to consumer. So whichever company is selling directly to the consumers, only research on those companies, only write news on those companies. Yes, sir. Actually, I was little bit confused because I also wrote one more news about MG Magister. I saw that. Tell it, what is this news on? Okay, sir. MG launches Magister at 40.99 lakh. JSW Motor India launched its flagship SUV, the Magister, targeting the premium SUV segment in India. The Magister 4x2 variant starts at 40.99 lakh,
The Magister 4x4 variant is priced at 44.99 lakh. The SUV is positioned competitively against the Toyota Fortuner 4x2 and Toyota Fortuner 4x4 at Neo Drive. MG aims to strengthen its presence in India premium SUV market through Magister launch. The launch reflects rising demand for luxury and high performance SUVs in the Indian automobile sector. So which stock will benefit from this? Sir, the JSW, JSW is listed. JSW Motors. JSW Motor is listed. What is the market cap? Sir, I didn't wrote it. I'll update you on that. So how you wrote for JSW Steel? JSW Sir, Motor is not listed in India. For okay, information. okay, sir. Then why are you writing? Okay, it is, again, see, it is a good news. I am not saying it is not a bad news. It's actually good. It's good that you are writing it. But the question is, now you are putting efforts not in the right direction. Okay, sir. Got it? Yes, sir. That is the problem. Rather, it is fine. You are playing a good cover drive, but straight into the fielder's hand. Yes, So sir. it is of no use. Okay, you have to find that how it goes. Or else what is the point of you? I will just clap. Okay, good one. You are not making any runs on it. Yes, sir. That is the problem. Yeah. Okay. Acha, now if you have written it, so now let's say if you have general knowledge, let's talk about general knowledge. Now you have to tell me. So I am a car fanatic guy. Okay, I know I look at cars every day in my phone. It is always I read about cars. Yes, sir. Now when the Magister is launched, I will ask you what is the horsepower that Magister is making and what is Fortuner is making. What is the difference between 4.2 automatic and 4.2 automatic and 4.4 automatic? And what is the Magister? How many products are they launching? You said Magister is 4.2, huh? What Yeah. is 4x2 and what is 4x2 80 and what is 4x4? You know? Actually, 4x2 means the four-wheeler cars, rightly, and the engine produces the only pressure is put on the two wheels of there are four wheels in a car, so only pressure is put on the the front wheels of the car, and 4x4 puts pressure on the four wheels. Okay, Yes. fine. Now, how much bhp does it make? I am not aware about it. What is the size of the product? How many seaters are it? What is the wheelbase of it? You know why I'm talking on all this? Yes. Because when you say that it has been launched in the premium segment, if Yeah. the wheelbase or the leg space are lower for this car, probably you might not buy a car. Or Yes. so not you, but people will not buy a car because there is a wheelbase is small. Or when boot space, what is the boot space? You have to differentiate between the products. Now Okay. you think when you go to buy a car, what are the things you look at? Power, Yes. features, boot space. I'll tell you, these are the basic features that I look. First Yes. is obviously the leg space. That is called the ground clear. So you will not get leg space. If you Google it, what is the leg space? You will not get. You will always get the wheelbase. What is the wheelbase? What is the wheelbase of Fortuner and what is the wheelbase of MG Magister? Okay. Then Okay. how much power it makes? How many liter engine is that? Fortuner is 4-liter engine. How much liter engine is this? What is the boot space? What are the features that Magister is giving and Toyota Fortuner is not? Okay, sir. This is how you answer your this news. Yes, sir. Or else this is just an update. And how many variants are there? Whether it is a diesel, whether it is a petrol, or whether it is a hybrid. These are the questions that I'm asking you now. Okay, with this news. Sir, it is basically petrol and diesel. What is the cost of petrol? What is the cost of diesel? How much difference is that? What is the mileage that this is both are giving? ना ये सब question हम पूछते ना. This is basic question ना. Yes. तुम भी है तो you also have a car. Now you also must be asking the same questions. Correct ना? Yes, sir. So this is how you improvise. Okay, sir. Okay, got it. Yes. But I told you that reason. No point writing a news which is not related to the stock market. Yes. Okay, it was a good one. I'll say it was a good shot, Rishikesh, but stayed into the hands of filter.
Thank you, Okay. sir. Okay, fine. Okay. Sir, can I? Yeah. Yeah. Sir, good morning, everyone. So today I have update on the Indian hospitality sector. So it is a research that is done by the JLL Consulting. So the heading of my update is hotel deals may hit $1 billion in 2026. The quarter Ankur, one one invest. second. Ankur, where was this news? Sir, Economic no? Time, page number 5. 1 second. Just wait. Yes, sir. New Delhi edition. Yes, sir. Delhi edition. Delhi edition. Achha, okay. Yes, yes. Page number 5, sir. 5. Sir, actually, I wrote the same news. Yeah, can present. No? Later on, you can add things. Yeah, go ahead. I'll start. So, the heading of my today's Indian hospitality sector news is the hotel deals may hit $1 billion in 2026 as quarter one investment surged to 252% already. So, Indian emerges as the top hospitality investment market. According to the news, Indian hotel transactions value touched $345 million in Q1 26, which is last year $98 million, and it increased by 252% YOY, which makes India the fourth largest hotel investment market in APEC. APEC is the Asia Pacific region, and it is for the first time that India is in the top five list in this market. So 2026 hotel investment could reach a record $1 billion, and the investment surged 67% to $567 million in CY financial year 2025, and India contributes 30% of APEC hotel transaction volume in Q1 26. The leaders in this market is Japan, which is $1 billion, China is $725 million, South Korea is $471 million, and then India $345 million, and the fifth position is captured by the Australian market, that is $235 million. The Indian is showing the great presence in this hospitality sector because of the domestic demand and the tourism driving investment cycle. So PE firms, family offices, and the listed hospitality players are showing the great presence in the hospitality sector. And sir, if the numbers I am talking about, the future data that the Indian hospital sector may rise up to the $1 billion annually, and the RevPAR growth likely to sustain between the 10 to 15%. 10 to 15%, and the major capital attract from the luxury and leisure destinations. Now, if I conclude which company will affect more in listed Indian companies, so Leela, Chalet, IHCL, and SEMI. These are the significant players which are diversifying their portfolio, increasing their keys by 2030. So, the article says that the luxury and leisure destination will be capture the maximum capital market. So, Leela is the one who is focusing more on the leisure sector, and the majority of their contribution in revenue and the PAT margin are coming from only from the leisure and luxury destinations. So, according to me, from this news, the Leela will be the one who will get benefit more, and after that, the other companies will gain it, can take the market, sir. That is from my side. Okay. And who wants to say this news? Sorry, sir. नहीं आप और And किसी ने me. बोला ना? Okay. Yes, sir. Sorry, yeah, Danish, go ahead. So good morning, everyone. So the topic of my newsletter is on hospitality sector. So this is on Economic Time Delhi edition, page number 5. India enters the APEC top 5 for hotel transaction for the first time. India hotel investment market saw a strong growth in financial year 26. Hotel transaction reached $345 million in quarter one compared to its previous year, which is $98 million. For the full year 25,
Hotel transaction stood at $567 million with a 67% year-on-year growth, making India one of the fastest growing hospitality investment market globally. JLL expects India hotel investment deal to cross $1 million in a financial year 26, which would mean nearly about 1.8x 1.8 x growth over financial from previous year if the strong momentum is continues. Apex League table, India overtakes Australia, trails by the Japan, China, and South Korea. Japan lead the APEC pack in quarter one at $1 billion, followed by China $724 million and South Korea $471 million, and India stood at $345 million. Uh, and Australia at $235 million. Collectively, APEC top five historically around 80 to 70% of neutral transaction volume. India inclusion in the APEC League signals a structural shift in the capital flow towards South Asia. Mainly, domestic strength insulates India from global headwinds. Strong domestic travel demand, rising hotel signing, and increasing participation from PE firms, family office, and listed company are driven India hospitality growth. JLL noted that India is now on a growth stage, hospitality growth stage, while strong MICE and leisure travel continue to improve occupancy and RevPAR trends year on year. My conclusion is a major concern is global slowdown and overbuilding risk. While the demand remains strong, key concern include a potential global economic slowdown, geopolitical tension, and impact inbound tourism as aggressive hotel supply addition in premium market. Mainly the key benefit in this sector is Indian Hotel, Lemon Tree, and Chalet due to its improving occupancy and pricing power. The main concern for the companies is margin sustainability and rising operating cost, which remain the key monitorable point. Okay, fair enough. So guys, see, overall, as I'm bullish on the hospitality sector. Now, whenever this investment is done, it takes time for it to perform. मतलब ऐसा नहीं है कि investment करके quickly perform होता है. It takes time. Now, what is happening in India? तुमको ना, Tanishq and you said before. Sir, me. Yes, sir. Yeah, sorry. So you also have to talk about this news, जो newspaper में आया, कि sir, though it is trend positive, but there is some short-term headwinds that is the industry is facing. Because तुम्हारी news के हिसाब से ना, let's say अगर मैं analyst नहीं होता, मैं एक normal तुम्हारा client होता, मुझे पता ही नहीं हॉस्पिटलिटी में क्या चल रहा है, तो मैं तुमको सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तो हॉस्पिटलिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो लग्जरी बोला, ये बोला, तो इज इट इन्वेस्ट, तो तुमको बोला कि सर नो, देयर आर सम शॉर्ट टर्म प्रेशर्स व्हिच इज लाइक देयर इज एन sorry, So my news fuel is pressure. related to that short-term headwinds only. So, sir, we have to. Should I continue with them? One second, side. So, sir, Yeah. we have to connect the news from different sector also. डिफरेंस see, तुम बोल रहे हो टूरिज्म ग्रो होगा या हॉस्पिटलिटी ग्रो, क्यों होगा? जब लोग घूमेंगे तब होगा ना. Now, Yes, Modi sir. government has said that you should stop traveling. They have said unnecessary travel should be stopped. कल ही था, Sammy Hotels was down 3%. तो उसके लिए बोला था कि वो प्राइसिंग देखते रहो, वो मार्केट ट्रैक करते रहो कि स्टॉक्स अगर गिर रहे हैं. मेरा जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स ना, पोर्टफोलियो स्टॉक्स में मैंने बेसिकली सेक्टर वाइज ही मैंने डिवाइड किया है. तुमको कुछ ना Yes, कुछ sir. न्यूज तो मिलेगा सेक्टर के बारे में. Yes, So sir. what is happening that Modi government has said that you should travel unnecessary foreign travels. Prices बढ़ रहे हैं, oil, there is an oil crisis. Still the situation doesn't stabilize. It is very difficult. You might see sir, एक दो quarter में there will be a problem in the hotel industry because ये सब news आ रहे हैं. तो ये तुमको as a client basis पे तुमको ये news relate करनी है. तुम्हारी news अच्छा था because my next question will be should I invest? तुमने तीन चार stocks के नाम लिए, should I invest? Sir, there is some So, sir, short-term headwinds. हाँ, ऐसा है. So, sir, as the sector COGS, the drivers are energy, employee, food inflation, etc. remain the key risk.
So we have to be in a we No, have to be conscious in short term. इन्फ्लेशन कॉस्ट ये तो पूरे इंडस्ट्री के लिए ही है ना, पूरे इंडिया के लिए रिस्क है ना। इन्फ्लेशन बढ़ा तो हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट होने वाला है ना, ऐसा नहीं कि होटल को इम्पैक्ट होने वाला है। करेक्ट। Yes, तुम्हारा sir. जीडीपी ग्रो हुआ, जीडीपी कम हुआ तो ऑब्वियसली पूरे सेक्टर को, तो वो तो जनरलाइज हो गया। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर क्या कि सर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मैं तो डिमांड कम होगा, तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, डिमांड कम होगा। बी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज, सेक्टर नहीं मैं बोला इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ठीक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज क्या इम्पैक्ट होगा। अभी एग्जांपल आई विल टेल यू। तुम अगर बोलते हो ना कि सर ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो ऑटो सेक्टर को इम्पैक्ट, ऑटो को इम्पैक्ट होगा, करेक्ट, ये सबको पता है। ऑयल प्राइस बढ़ Yes, गए sir. तो ईवी को इम्पैक्ट होने वाला है, No, sir. नहीं। तो फिर तुम सेक्टर कैसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। तो जनरलाइज नहीं कर सकते कोई भी, यू कैन नॉट जनरलाइज थिंग्स। ये सब तुम्हें जनरल हो गया कि सर इन्फ्लेशन बढ़ा, जीडीपी ग्रोथ कम हुआ, ये वो नहीं। स्पेसिफिक सर ये जो होटल इंडस्ट्री को ग्रो करता है, ड्राइवर्स है, वो यही एयरलाइंस ही है तुम्हारे। कि अगर फ्लाइट्स ही बंद हो गए, फ्लाइट टिकट कॉस्टली हो गए, तो तुम फिर मतलब ही नहीं है ना कुछ इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करके। होटल में फिर कितना भी इन्वेस्ट करो, कितना भी लग्जरी होटल बनाओ, अगर लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं जाने को। अभी जैसे मुझे बैंगलोर जाना था, इतने फ्लाइट प्रॉब्लम से कट डाउन हुआ है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ बैंगलोर, आई विल कट, आई विल स्टॉप, कैंसिल ऑल माई प्लान्स। ऐसा है। Yes, घूमने sir. मतलब घूमने जाना है मुझे तो मैं नहीं जाऊंगा अभी, फॉरेन नहीं जा रहा हूँ मैं, आई एम नॉट गोइंग। तो विंतिव का है विच इज यू नो हैविंग, विंतिव है, ताज है, ओबरा है, कल ही था क्या कि वो लोग साउथ ईस्ट जा रहे हैं। उस दिन ही न्यूज़पेपर में था एक कि पीपल आर मूविंग साउथ ईस्ट, क्योंकि वेस्ट में वॉर चल रहा है। तो अभी फ्लाइट्स ही महंगे हो गए तो कौन जाएगा, मैं घूमने भी ना जाऊँ। तो ये सब चीजें तुमको लिंक करनी फ्रॉम द न्यूज। Sir, we have to also collect the data how much tourism is affected by the flights and train. ट्रेन, यस। तो ये क्योंकि सेक्टर्स ऐसे ट्रैक होते हैं, इट इज नेवर कि मैं सिर्फ ट्रैक करूंगा तो मैं सिर्फ होटल ही ट्रैक करूंगा, मैं सिर्फ ऑटो ही ट्रैक करूंगा, कितने सारी चीजें इंपैक्ट होते हैं वो सेक्टर पे। ये तुमको समझना है और ये न्यूज़पेपर पे ही समझता है। अभी चलो, अभी तो मैंने तुमको हेल्प किया लिंक करने में, तो ये मेरा काम है कि तुमको हेल्प करना कि ऐसे भी आया। पर अभी मैं क्यों कर पाया, क्योंकि तुमने न्यूज बोला, इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज था, तुम्हारा न्यूज 4th पेज पे था, मेरा न्यूज 10th पेज पे है। मैंने समझा ना कि अरे हाँ ऐसा भी हो रहा है, होटल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो तुम्हारे वो दिमाग में कंटिन्यूसली चलना चाहिए कि अरे ये ग्रोथ कहाँ से होगा। ये लोग बोल तो रहे, न्यूज में आ तो रहा है कि ग्रोथ होगा, पर थोड़ा दिमाग लगाना कि बिजनेस मॉडल समझना है। हर एक इंडस्ट्री का हमको बिजनेस मॉडल है कि ये पैसा आता कहाँ से। या लोग ग्रो, हम बोलते हैं कि ये 10% ग्रो होगा, 20% ग्रो होगा। अभी तुमने किसी ने बोला रेफ पार ग्रो होगा, रेफ पार, अरे अंकुर तुमने बोला रेफ पार विल ग्रो बाय 10%। Yes, sir. तो 10 to रेफ पार 15. ग्रो का पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट इज रेफ पार। रेफ पार इज ऑक्यूपेंसी प्लस द योर ARR। ARR. तो ARR ठीक है, ग्रो होगा, बट व्हाट अबाउट रेफ ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी तभी ग्रो होगा ना जब फ्लाइट्स आएंगे या रेलवेज होगा। तो तुमने उस पर रिसर्च किया है क्या, रोड अच्छे होंगे। And तो sir, ये, there is also a Yes, demand sir. and supply shortage in the market. यस, Yeah. दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, दिस इज शॉर्ट टर्म हेडविंड्स। ऐसा है, ये लॉन्ग टर्म कभी ना कभी तो सॉल्व ही हो जाएगा। फ्यूल का प्रॉब्लम अभी है प्रॉब्लम, तो तुम्हारा ये काम है कि मुझे बताना कि सर ये अभी शॉर्ट टर्म हेडविंड्स है ये सेक्टर में। इंडिगो ने उसका 10 to 20% कैपेसिटी कम कर दिया है, दैट इज डोमेस्टिक कैपेसिटी कम कर दिया है 20%। और Sir, तनिष्क तुम Air India also. हाँ अंकुर, और तुमने ही बोला कि सर डोमेस्टिक डिमांड ग्रो हो रहा है। मैं तो सीधा तुमको बाद में पूछूंगा, अरे क्या डोमेस्टिक डिमांड ग्रो हो रहा है, डोमेस्टिक शॉर्टेज हो रहा है, फ्लाइट्स ही नहीं है। फिर क्या बोलोगे अंकुर तुम अभी इसके इसके ऊपर क्या बोलोगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन भूलने के पहले ही तुम्हारा ये एक्सप्लेनेशन चाहिए सामने। Yes, सर sir. मैं ऑलरेडी तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है, वरना तो क्या होगा, इंटरव्यू में वही पूछेगा तुम। और फिर क्या होता है, अगर तुमको ये न्यूज नहीं पता ना, तो तुम बोलोगे हाँ सर आप बराबर बोल रहे हो, ऐसा है। जबकि है ये शॉर्ट टर्म ही, मुझे भी पता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ही है। एज अ फंड मैनेजर मैं तो इन्वेस्ट करके रखा, मैं थोड़ी बोलने वाला हूँ कि अरे इंडिगो का प्रॉब्लम है तो मैं होटल स्टॉक बेच दूं मेरे। जस्ट इमेजिन, मेरे पास अगर 100 करोड़ के स्टॉक्स है, तो वैसे मैंने क्या वो क्या 10% ग्रोथ के लिए लिया है कि 10% हो गया तो मैं बेच दूंगा। एग्री, No, No, sir. no, sir. एग्री No, ना। sir. जो फंड लेगा तो वो तो सोच के लेगा ना 100 करोड़ मैंने कब इन्वेस्ट किया है। तो मुझे इससे शॉर्ट टर्म से क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो मुझे पता है। बट अभी अगर मेरे पास 100 करोड़ है तो इज इट द राइट टाइम टू पुट, ये तुम्हारा काम है, बताना।
तो अभी 1-2 क्वार्टर अफेक्ट हो सकता है, तो हो एक्चुअली सकता है, अच्छी हाँ, एंट्री मिल सकती है एंट्री इसमें। मिल सकती है, यस। तो क्यों अफेक्ट हो रहा है, तो तुमको पता होना चाहिए ना अफेक्ट क्यों हो रहा है, और ये तुम भी एनालिसिस करोगे कब तक सॉल्व हो सकता है ये इशू। या फिर अगर कुछ Yes, पता sir. नहीं है तो सर जस्ट वेट एंड वॉच। जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता सर, इट इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग एज ऑफ नाउ। तो लेट मी गो। तो तुम्हारा क्या काम है, अगर तुम मेरे क्लाइंट हो, तुम्हारा ये काम है रोज देखना कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, फ्लाइट टिकट्स कितने हैं, कितने महंगे हो रहे हैं, ये हम रोज, तुम्हारा प्राइस स्कैनर खुलना होना चाहिए तुम्हारे मोबाइल पे कि क्या हो रहा तो है प्राइस उसके में। लिए क्रूड ऑयल प्राइस भी ट्रैक करना पड़ेगा, क्रूड जब ऑयल तक प्राइस भी वो ट्रैक करना कंट्रोल है। में नहीं आता तब तक ये इशू थोड़ा रहेगा ही रहेगा। करेक्ट करेक्ट, तो ये हो गया। तो देखो अभी आ गए इकोनॉमी पे घूम फिर के, जबकि कुछ लेना, तुम्हारे होटल न्यूज से इसका कुछ लेना देना नहीं था, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं था, बट ये सब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। सर Sir, ऐड I ऑन have टू one question. द सेम न्यूज़, तो मैंने कंपनी का एनालिसिस किया तो लेमन ट्री का सर सबसे ज़्यादा लेवरेज है, तो मे बी उनको सबसे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। वाई इट हैज, Sir, it, जो होटल्स का, हाँ क्यों क्यों शॉन, हाँ, कैसे लगा? नहीं मतलब अभी IHCL देखो तो उनका डेट फ्री बैलेंस शीट है, तो अगर अभी इन्वेस्ट करना ही है तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन लाइक सेफ प्लेयर। अभी तो सेक्टर में ही नहीं से, पर अभी तो टाइम ही है ना इन्वेस्ट करने का इस सेक्टर में, हाँ तो नहीं, देयर मैं इज एन बस एडवांस। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर कि इस वक्त कौन सा सेफ होगा अगर करना होगा ओके, तो वैसे में आई वाज सेइंग। नहीं अभी तो ये सेक्टर है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, दिस इज नॉट अ सेक्टर टू इन्वेस्ट एज ऑफ नाउ, जब तक ये Yes, सिचुएशन sir. नॉर्मलाइज नहीं होता। I have done my analysis on the same thing, and I have checked that ITC, Lemon Tree, and chalet hotels have more leverage because there is a data that's saying that tier two and tier three contributes around 40% of the transactions in the volume. हम्म, And these three companies have their locations primarily in tier two and tier three locations. So there could be a possibility where these could be in a position where someone could put their money. someone could put their money, but any question is now, what is my question is, why do you what is the purpose of investing? अभी तो सेक्टर में इन्वेस्ट, वो कोई भी कंपनी हो, और डेट फ्री हो डेट ना हो, ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना सेंस ही नहीं बनता ये टाइम पे। Yes, sir. तो क्या डेट फ्री है तो लोग अंदर रहने आएंगे क्योंकि ताज इज No, डेट no, फ्री, no, no. है ना? तो तुमको हमेशा बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। अगर ग्रोथ ही नहीं Yeah. है तो बैलेंस शीट कितना भी स्ट्रांग हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? यस ऐसा है ना। आज मैं sir, बोलता हूँ I मेरे have one. पास, आज मैं बोलता हूँ आई हैव लेट्स से 3-4 प्रॉपर्टीज, मेरे पास इतने स्टॉक्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मेरा बिजनेस ही ग्रो नहीं हो रहा है तो क्या करूँ वो प्रॉपर्टीज का मैं, Hmm. राइट? मतलब अभी Yes. चलो मैं, मेरा बिजनेस है रेंटिंग का, ठीक है, रेंटिंग बिजनेस डाउन हो गया पूरा, एग्जाम्पल है, मेरे पास प्रॉपर्टी, बैलेंस शीट तो मेरा है, अभी कोई रेंट को लेने को ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ वो पूरा प्रॉपर्टीज का, वो तो वेस्ट ही हो गया ना मेरे। तो ऐसा होता है। Sir, I have one question. या Sir, can Airbnb become the threat in future हाँ हाँ, हो for सकता है। the? Okay. मतलब आया था बीच में, बट इट वाज, आई विल से, ठीक है, मतलब इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। Sir, on Airbnb there are mixed reviews. मतलब someone हाँ, बहुत praise करते हैं and someone saying that the conditions are not good, and नॉट गुड, हाँ, uh, मिक्स and रिव्यूज the है। one who want the leisure and like luxury stay in a good hotel, then why air he or she will be हाँ हाँ, going to the Airbnb. मिक्स है, मिक्स रिव्यूज It's है, a मिक्स रिव्यूज है, mixed reviews है sir. मिक्स है, मतलब अभी तक कुछ नहीं, थ्रेट तो है ही, मतलब कंपटीशन तो है ही, बट अभी कंपटीशन ऑब्वियसली एयरबीएन का कंपटीशन ताज से नहीं है। एयरबीएन का कंपटीशन No छोटे sir, not कंपनी, at all. छोटे इस पे है। हाँ ऐसा है। बिल्कुल sir, yes. सर तो आई हैव एक वन क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट विलास का भी ट्रेंड है जो कुछ की लोकेशंस में बहुत चल रहा है, जो एक तरीके से सीधे सीधे लग्जरी होटल से कंपटीशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे करेक्ट, प्रिवेसी, प्राइवेट पूल वगैरह सब मिलता है, और कॉस्ट डिफरेंस भी अगर मान लो बड़ा ग्रुप है तो लगभग लगभग सेम प्राइसिंग में आ जाता है वो। तो वो बहुत बड़ा एक कह लो हाँ, एंटीथेसिस हो सकता है लग्जरी होटल्स के लिए। नहीं आई विल टेल यू साहिल, लग्जरी होटल्स का ठीक है, हाँ वो एक है, बट ये इवेंट स्पेसिफिक है। अभी क्या होता है, आई विल टेल यू, लग्जरी विलास लेने वाले लोग कब जा, तुम ना तुम्हारे फैमिली, मतलब जैसे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ घूमने जाते हो क्या कभी? तो एक्सटेंडेड फैमिली नॉर्मली अब जैसे फ्रेंड्स के साथ लोग जाते हैं, 6-8 लोग हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन लेट्स से 5 स्टार और 4 स्टार, अगर हम्म, 8 लोग मिलके 3 BHK 4 BHK विला ले रहे हैं तो पर पर्सन 3,000 के आसपास आता है वो।
3 से हाँ 4 हजार, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड हाँ द टाइमिंग व्हेन यू गोइंग। सो कई बार वो ऐसा होता है कि एक 4 स्टार 5 स्टार से चीपर भी पड़ता है और ज्यादा ये होता है, मतलब ऑटोनॉमी ज्यादा होती है। हाँ, बट कैसा आई विल टेल यू, तुम अगर तुमको ताज की आदत है ना जाने की, सर्विस की इतनी आदत है, तुम कभी विला में नहीं जाओगे, बिकॉज विला में सर्विस का प्रॉब्लम होता है। वो सर कैन कॉर्पोरेट आई इवेंट्स के इसमें तो ऑफ कोर्स इवेंट्स वो बात है, हाँ। ज्यादा ये है। हाँ, नहीं इवेंट्स की। इंडिपेंडेंट ट्रैवल में थोड़ा मतलब और इंडिपेंडेंट ट्रैवल में क्या होता है, वो जो मैं बोला ना, वो जो डिमांड है, पहली बात तो ताज ऐसे जगह पे विच आर बिजनेस सिटीज, ओके। ताज हो गया, then, फिर तुम्हारे आईटीसी हो गए, ये बिजनेस सिटीज में बेसिकली है। और दूसरे लीजर डेस्टिनेशन में है, ओबराय है, वो भी है लीजर डेस्टिनेशन में आ रहा है। अभी विला हम ठीक है, एयरबीएनबी भी है, मैं बोलूंगा कि चलो 10% मार्केट से ले लिया एयरबीएनबी में। बट जब हम घूमने जाते हैं तो ऐसा कितने बार होगा कि हम एक्सटेंडेड फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। आई हैव नेवर बीन आउट विद एन एक्सटेंडेड फैमिली, रेयर है, मतलब बहुत रेयर है। मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स, ये 4 लोग हम घूमने जाते हैं। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट बाइंग अ विला, क्योंकि इतना बड़ा विला में 4 लोग क्या करेंगे, करेक्ट। मैं और मेरे वाइफ जाते हैं तो प्रोबेबली वी आर ऑन द गो, तो हमको होटल्स ही चाहिए। वो विला में जाके कौन वो सब नाश्ता करेगा, फिर अभी ऑब्वियसली 2 जन के लिए तो विला डजंट मेक सेंस। 2 लोगों के लिए डजंट मेक डजंट सेंस मेक है सेंस। that। 4 भी डजंट मेक सेंस। 4 लोगों के लिए भी विला डजंट मेक सेंस। हाँ, अभी ऐसा है, ऐसा इंडिया में तुमने कितना देखा है, साहिल तुम्हारा दोस्त है इतने सारे, तुम भी कितने बार गए हो 4 दोस्तों के साथ घूमने, साल मैं में कितने बार रिसेंट जाते हो? मतलब गया था इसीलिए वो एक्सपीरियंस हाँ, किया है वो अभी। ऐसे कितने बार जाते हो तुम, इतने सालों में कितने बार गए हो? ऐसा है, दो तो ये तो 2 3 बार। 2-3 बार गए, हाँ वही तो ऐसा है। तो उससे 2-3 बार जाने से ताज को कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला ना, ऐसा है। तो ये थोड़ा है, मतलब आई विल नॉट से इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, है कॉम्पिटिशन है। व्हाट आई थिंक फ्रॉम अ ह्यूमन माइंड, मतलब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ह्यूमन बिहेवियर, कि जो ताज में जाते हैं, सी दोज आर स्पेंडिंग 30-40 थाउजेंड फॉर अ सिंगल रूम। दे डोंट पे फॉर द रूम, दे पे फॉर द सर्विस। रूम तो क्या सेम ही होता है, एसी होता है, बेड होता है, वॉशरूम होता है, और क्या होता है रूम में अलग? इट्स जस्ट अबाउट द सर्विस दैट दे आर पेइंग फॉर। ये मैंने भी देखा। मैंने बोला ना, आई वॉज गोइंग आउट, हम अलीबाग जा रहे थे। तो हमारा प्लान था, मैं वाइफ है, विल गो फॉर 3 डेज। तो 3 डेज का कॉस्टिंग वॉज 10,000 कुछ था, देन 12,000 का, तो 36,000 कुछ हो रहा था हमारा। 12,000 रूम, एवरेज रूम। आई सेड नो, वी विल गो फॉर 1 डे बट विल गो टू ताज। मैं बोला वो 3 डेज का ट्रिप कैंसिल करते, हम 25,000 रुपए एक ताज पे जाते हैं। द रीजन आई वेंट देयर एंड व्हाट आई सॉ ओवर देयर आसपास इज दैट, अभी मैं क्यों गया पता है, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था होटल इंडस्ट्री पे। हमको बाहर जाना था किधर, तो मैंने अच्छा, बोला मतलब थर्टी वो बिजनेस एक्सपेंस भी हो गया, ट्रिप भी हो गया आपका। हाँ, नहीं वो तो नहीं, पर ट्रिप पैसा भी तो चाहिए ना ट्रिप को, ऐसा थोड़ी ना कि ट्रिप 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 3 दिन का था। बट आई मेड इट 1 डे ओनली, कि मुझे वो 25,000, क्योंकि बजट था हमारा 30,000 का। तो आई सेड नो, आई विल स्पेंड 25,000 ऑन सीइंग कि लोग ताज में जाते क्यों है, व्हाट इज द पर्पस। तो मैं जब ताज में गया तो व्हाट आई फाउंड आउट इज दैट वो रेडिसन का होटल लोगों ने टेक ओवर किया था। ओके, रेडिसन का होटल ताज ने टेक ओवर किया था। तो रूम्स तो सेम ही थे, रेडिसन में मैं पहले 15,000 में भी गया था, और आज वही रूम उन्होंने 20,000 25,000 किया है। तो जब मैं उधर गया तो आई आस्क्ड हिम, तो मैंने जब देखा आजू बाजू में, तो व्हाट आई रियलाइज दैट पीपल डोंट कम हियर फॉर द रूम्स, दे आर ओके टू पे 25-30,000 फॉर दैट ब्रांड। ब्रांड मतलब क्या? द सर्विस, कि मैं जा रहा हूँ एंड सर्विस वॉज फैबुलस फॉर ताज, मतलब तुम जाते हो सब कुछ रहता है। फॉर्चुनेटली मैं गया ना, तो वहाँ पे काफी क्राउडेड था, पूरा होटल बुक था, तो थोड़ा सर्विस इशू हुआ। तो मैंने तो उनको गाली दे के आया वहाँ पे कि योर सर्विस इज नॉट गुड। मेरे को बोलता है कि सर हाउ वाज द रूम, मतलब आई हैव कम टू द सेम रूम, पहले 15,000 रुपए था, तुमने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया, किस बात के एक्स्ट्रा लिया तुमने? बोलते आई एम राइटिंग अ रिव्यू ऑन दिस, ये बोला नहीं सर ऐसा है वैसा है। तो कुछ कुछ हुआ, इशू हो गया, बट दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व कि जो लोग वहाँ पे आते हैं। एंड आई विल वन मोर देयर, कि ताज में जब लोग जाते हैं ना, तो दे डोंट गो देयर फॉर द स्टे। उनको ना वो लेवल के लोगों के साथ रहने की आदत होती है। अभी मुंबई में व्हाई आर द प्राइसेस सो हाई फॉर रियल एस्टेट? इट इज बिकॉज ऑफ द स्पेस, कि बहुत बड़ा जगह इसके लिए है, कुछ जगह तो लोकेलिटी है नहीं। मैटर्स अ लॉट। लोकेलिटी मैटर्स अ लॉट। तो ये माइंडसेट है। तुम एयरबीएनबी अगर किधर कोने में रहा ना, लग्जरी भी रहा, फिर भी तुम नहीं जाओगे, कि कोने में कौन जाएगा, ऐसा है। तो ये एक प्रॉब्लम है एयरबीएनबी का, जो इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ। यूएस में यस चलता है ये, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, द माइंडसेट इज अ प्रॉब्लम। आई विल नॉट टेक माई कार एंड गो टू अ प्लेस वेयर द एक्सेसिबिलिटी इज लो। एंड यूजुअली बंगलोज का एक्सेसिबिलिटी हमेशा कम होता है, क्योंकि बंगलोज तुमको रास्ते पे मिलेंगे नहीं।
ये आई बाकी कुछ नोटिस तो IHCL शेयर होल्डर्स सिर्फ वो डिस्काउंट कूपन यूज करने के लिए चले जाते हैं रहते हैं। कि हाँ मिल रहा है कूपन, लेट्स यूज इट। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो आया नहीं, मैं ओवरऑल होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे पहले ताज हो गया, आईटीसी हो गया ना, ओबराइज हो गया, यू सी देयर लोकेशंस, वो लोकेशन और वो लोकेशन का एक्सेस ना हमेशा अच्छा ही होगा, इट विल they नेवर बी they कि they लोकेशन खराब। secure the most prime property in any city, no? क्यों होता है They ऐसा, क्यों have होता that है? kind of हाँ, तो समझ रहे हो, यू सी द माइंडसेट ऑफ पीपल, इट इज नॉट अबाउट कि एयरबीएनबी से कम है, वो सम टाइम पे है, तुमने जैसे बोला यस यू गो, तो देयर आर पीपल a particular segment may be like preferring that, but yeah, दोनों के पास अपना अपना एक मार्केट तो है डेफिनेटली। मार्केट तो है, यस, तो वो मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा मैं भी बोल सकता है 10% मार्केट गया होगा ताज का, फाइन, बट दैट इज ओके, मतलब ठीक है, कंपटीशन तो आएगा ही आगे जाके, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं आएगा। ओके, क्या हेलो सर? सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सॉरी, हाँ यस। सर, मैंने न्यूज़पेपर में रीड करा था कि डिस्पोजेबल इनकम हमारी बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंड इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके लेमन ट्री शैलेट होटल को एडवांटेज मिलेगा। बट सर, जैसा आपने बताया कि 15,000 का टैरिफ वाला रूम 25,000 हो गया, तो सर रियली सर डिस्क्रिशनरी स्पेंड इन होटल्स में बढ़ेगा? मतलब हाँ। न्यूज़पेपर में तो लिख दिया, हम्म तो मतलब मैं पूछना था कि कैसे आर्टिकुलेट करें कि ये न्यूज़ ठीक है, या फिर सिर्फ एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड में डाल दिया सबको, होटल है या फिर कैपिटल वाइट गुड है उन सब में। नहीं, तो ये सब तुमको डेटा सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट ट्रैक करने के बाद ही आएगा, वो तुमको ऐसा डेटा मिलेगा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ताज में ग्रोथ हो रहा है, आईटीसी में ग्रोथ हो रहा है, तो इट इज बिकॉज दिस स्पेंडिंग इज ग्रोइंग। तुम ऐसा ऐसा लेमैन में आज तुमको बोला रिसर्च करो, तुम कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए बताए ना, इंडस्ट्री ट्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट। सी, अगर मैं बोलूँ डिस्कशन स्पेंड बढ़ रहा है इंडिया में, क्या प्रूफ है इसका? लग्जरी कार सेल्स इंडिया में बढ़ रहा है, ये प्रूफ है। लग्जरी होटल्स का सेल्स बढ़ रहा है, ये प्रूफ है। लग्जरी हाउसिंग बढ़ रहा है, ये प्रूफ है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, ये प्रूफ है। अभी ये सब बढ़ रहे हैं, तुमको कैसे पता चलेगा कि सबका जीडीपी सेल्स हो पर रहा है? कैपिटा ट्रैक कर सकते नहीं हैं। नहीं, इसका सब सेल्स हो रहा है, ये तुमको कैसे पता चलेगा कि सेल्स हो रहा है प्रीमियम प्रोडक्ट्स का, इसका हो रहा है? सर कंपनी ट्रैक कंपनी करते हैं, कंपनी ट्रैक करते, तो इसी को वही एक्सपीरियंस वो लोग पूछते हैं इंटरव्यूज में कि भाई तुम कंपनी ट्रैक कर देगा, तुम बता तो रहे ये सब बढ़ेगा, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास ये सब चीज बढ़ रहा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ रहा है, प्रूफ क्या है इसका? ओके सर। तो इसके लिए कंपनी ट्रैक किया जाता है, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ट्रैक कंपनी, नॉट लुक एट द कंपनी कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया, वो आजकल क्या हो गया, वो एआई तो टेक ओवर कर लेगा, उन्होंने किया ही है इनफैक्ट। यस सर, यस सर। तुमको अभी इंटरव्यू में ये पूछने नहीं वाले आरओई कैसे फाइंड होता है, रेशो क्या होता है, आरओ इंक्रीजिंग गुड साइन और बैड साइन, वो सब बेसिक क्वेश्चन, वो सबको पता है। ओके सर। अभी अभी आगे फ्यूचर। Hello, sir. Sir, I want to ask means how to link means suppose there is Ujjain Kumbh in 28, हाँ and there means IHCL means hotels are increasing room there or building new hotels. हम्म, Then how to link this with the growth? Means suppose वो उज्जैन में भी बना रहे और मुंबई में भी बना रहे, जहाँ पे मतलब अभी कुछ इवेंट नहीं है, तो वो ग्रोथ के साथ कैसे लिंक करना? हाँ। सो कैसा होता है, यू हैव टू गेट द ऑक्यूपेंसी रेट, तो ऑक्यूपेंसी रेट एक नॉर्मल होता है कि जब जब कुंभ का इवेंट होता है तो ऑक्यूपेंसी रेट लेट्स से 30 का 40% हो जाता है, ठीक है? ओके। हाँ। तो ताज के 1000 रूम्स है, हजार हाँ। रूम्स है तो 40% तुम्हारा ऑक्यूपेंसी होता है, और कुंभ के टाइम लेट्स से 50 होता है, ठीक है? ओके। तो कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हो गए? 500 रूम्स। बस 500 रूम्स इंटू द ARR, यार आ रहा। तो आ गया तुमको, तो वो जो नंबर आएगा वो तुमको सिर्फ प्रीवियस नंबर में ऐड करना है, तो ग्रोथ तुमको डिफाइन नहीं करना है कि सर 4% होगा या 5% होगा, वो नंबर इतना आ सकता है, एंड फिर जो भी ओके। ग्रोथ होगा वो फिर ड्यू डिफाइन कि सर मैं अज्यूम करा कि 7% ग्रोथ होगा, कैसे आया 7%? तो ऐसे आया। ओके। ओके। ओके, तो ऐसा कभी ग्रोथ नंबर्स नहीं होते, हम जब मॉडल में करते हैं ना, इट इज तो वो रॉन्ग थिंग है सबसे ज्यादा कि सर मैं एस्टिमेटेड ले लिया 10% ग्रोथ ले लिया 11%, पागल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। मैं खुद बोल नहीं सकता कि मेरा सैलरी, तुम बता सकते हो तुम्हारा सैलरी ग्रोथ कितना होने वाला है नेक्स्ट मंथ? नहीं, कोई नहीं बता तो तुम कहाँ सकता। से कंपनी पे रिसर्च करे जो खुद के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते, और तुम जाके किसी और की कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो? इट इज नेवर लाइक दैट, इट इज जस्ट अबाउट एस्टिमेशन। ओके। ओके। और एस्टिमेशन क्या, सेल्स का नहीं, वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री का,
मीन्स while buying the stock we don't means predict कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा हमें. हाँ, यू प्रेडिक्ट द नंबर, नंबर कितना होगा, और वो नंबर मैंने बताया अभी कैसे आता है. तो उसमें ओके. मेरा अजम्पशन क्या था, मेरा ऑक्यूपेंसी का अजम्पशन था, हाँ और होटल रूम्स तो मेरे पास है, वो तो डेटा है ही. हाँ. तो बस वही है. ओके. और जब भी हम ऑटोज में भी करेंगे तो ऑटोज में क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि कितना मार्केट शेयर ये ले सकता है, हाँ कितना हाँ. मार्केट शेयर इसने पहले लिया है. तो वो एक वो हिस्टोरिकल अजम्पशन हो गया कि पहला ये मार्केट शेयर इतना ले सकता है, तो अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च करे तो शायद से 10% मार्केट शेयर इसका आएगा. ओके. एंड सर सपोज IHCL के 1000 hotels है हम्म, और दे आर एडिंग 500 मोर हम्म, and in suppose ITC के 500 hotels and they are also adding 500 more, हाँ, then growth obviously ITC की ज्यादा होगी, तो we करेक्ट. should be bullish on ITC ना. आईटीसी, यस यस, मीन्स ऐसे ही तो होता है. IHCL तो इतना बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैप है अभी, तो हाँ हाँ, इससे करेक्ट ज्यादा कितना बढ़ेगा. करेक्ट करेक्ट. तो यही है, ये भी मैंने बोला था, चाहे तुम नहीं थे तभी, बट ये मैंने बोला था कि आईएचसीएल को इसके लिए बुलिश नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी ग्रोथ तो कर रहा है, बट इतने बड़े बेस पे ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए तो 10% ही दिखेगा भले नंबर बड़ा है. हाँ. ऐसा है. तो मैं एक छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, दैट इज व्हाई आई एम बुलिश ऑन शाले सैमी. छोटे कंपनीज देखते हैं. हाँ. आईएचसीएल भी है मेरे पोर्टफोलियो में, आईएचसीएल भी है. हाँ. व्हाई इट इज जस्ट बिकॉज मार्केट लीडर तो होना चाहिए, वो तो ग्रो हो रहा है. हाँ सर. बट व्हाट इज द सेकंड स्टॉक दैट विल ग्रो. एंड सर वन मोर थिंग, यू टोल्ड दैट अगर इंटरव्यू में जाते हैं हम तो एक ही कंपनी पे मतलब वी पिच द कंपनी एंड वहाँ पे ही 1 घंटा तक डिस्कशन होता है. हाँ, तो कैन यू मीन्स वन वंस पिच वन कंपनी फॉर अस, मीन्स हमें भी समझ में आएगा कैसा पिच करते कल हैं. तो किया ना, कल किसने किसने पिच किया, हीरो का. कल ही तो था, मैंने हीरो का पिच दिया पूरा. सॉरी, आई थिंक आई वाज नॉट देयर. हाँ, तो कल ही Sir, किया can हमने. we go ahead with the news? क्या यार. हाँ हाँ. सर अच्छा, साहिल मेरे वाज को सेइंग, साहिल वाज सेइंग, सॉरी. साहिल, want to talk about this Indian. yes sir, yes. So my news is related to the Indian carriers cutting their capacities, flight capacities. I'll begin. Yeah, go ahead. Indian carriers unable to capitalize on the summer demand due to fuel concerns. So basically, India's aviation sector is facing significant cost pressure from the fuel side, and also because of the rupee weakness, because their lease payments are mostly in dollars. They get their planes. Some of those planes are leased, and the payments are made in dollars. So they have those two pressures, and on top of that, now they are forced to cut their capacities. As we discussed, the flight capacity is almost reduced by 20% in case of Air India. In case of Indigo, it is down by 10 to 12%. And together, these two airlines only control roughly 90% of the aviation market, domestic aviation market in India. So that's a big impact. And because the aviation turbine fuel prices are almost at $160 right now, so it becomes unsustainable for them. Their margins are very badly affected because roughly 40-45% of the plane's operating cost is only in the fuel. So that is why they have taken such a decision. And even though the government is like in some states they have cut VAT and trying to give some sort of relief to companies, but it is not enough for them to still absorb all the cost impact. So they are trying to reduce their flights, and in cases they have done, like one thing I saw in the local news, not in ET, they have cut flights. Indigo have cut flights from Kolkata to North Goa Airport. So it is a very high occupancy sector. Mostly flights from every major city to Goa have 80 to 90% occupancy, which is higher in than say let's say a flight between Pune and Bhubaneswar or Mumbai and Bhubaneswar. So it is one of the most profitable sectors, but they still have to cut flights in that. So that will affect their profitability. And moreover, अच्छा. because of this, as we discussed, the hotel sector will also be affected because the footfall can also go down to key leisure destinations. कौन सा साहिल, ये तुमने जो न्यूज मुझे लिखा, मुझे जो लिखा है तुमने और जो तुम बोल रहे हो, इट्स कंप्लीट, देयर इज नो लिंक बिटवीन इट. कहाँ पे भी कैसे भी, तो इसके लिए मैंने बोला ना, दिस इज नॉट द वे टू राइट द न्यूज.
तुमको वो पैराग्राफ में ही डिफाइन करना है, इट शुड बी लिंक लिंक लिंक। ऐसा बीच में नहीं होटल सेक्टर में इम्पैक्ट होगा फिर तुम वापस यू गो ऑन द स्टॉक प्राइस, यू गो ऑन द क्रूड प्राइस। सो क्या हुआ, इफ आई वांट टू फ्रेम दिस न्यूज, एविएशन सेक्टर इज फेसिंग इम्पैक्ट। क्यों? बिकॉज जेट फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए। कितने हुए? इतने हुए। $160। हाँ, तो वो फॉर्मेट में ना, फिर उसके वजह से क्या हुआ है, उसके वजह से लोग ने ऑपरेशन कम कर दिए, फिर उसने कैपेसिटी Yes. कम कर दी। अब तुमने ये सब लिखा तो है डेटा पॉइंट, ये इतने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है साहिल, बट तुम प्रेजेंट ही So नहीं कर पा रहे। I did mention that no, हाँ, तो the ये तुमने कहाँ fuel पे prices मेंशन and किया? capacity. You mentioned it in a way that was a part of the paragraph. It should be a highlighted points जो तुम प्रेजेंट कर रहे हो। कितने So लोगों को like पता it है? may be too bolden that and हाँ, highlight that. बोल्ड दैट लिखना चाहिए तुमने, और फिर यही है तुमने बोला, बट उसका फॉर्मेट ही नहीं था कुछ। तुम पहले कुछ अलग बोल रहे हो, बाद में कुछ अलग बोल रहे हो। तो मेरा मैं थॉट पर सर कैपेसिटी क्यों कम किया, पूछू मैं क्यों कम किया, फिर तुम बोलते हो कि सर प्रायर प्राइस के वजह से कम किया। तो फिर ऐसा था कि मैं समझू क्यों कट करने वाला, फिर वो क्या होता है, इंटरेस्ट चला जाता है सुनने में। मतलब एक्चुअली वो कॉन्टेक्स्ट देने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा डिविएट हो हाँ, गया। तो वही, तो लिखते हो ना तो कॉन्टेक्स्ट में ही लिखो। डोंट राइट वन थिंग एंड प्रेजेंट वन थिंग, फिर ऐसा वो मत करो। बहुत बड़ा आर्टिकल हो जाएगा ना। नहीं तो बोला ना, पैराग्राफ 3 ही लिखना है, 3 पैराग्राफ ही सर 3 लाइन का ही पैराग्राफ लिखना तो रफली 9 to 10 लाइंस में पूरा ये है। हाँ, और ये पैराग्राफ रैप तो अप इधर होगा। तक ही था ना, ये तुम कहाँ पे है, ये रेट्रोस्पेक्टिव गेमिंग, ये तो अलग न्यूज है ना, न्यूज तो That तुम्हारा I इतना ही था। was like going to continue on the second हाँ, news. बट न्यूज तो इतना ही था तुम्हारा। Yeah. ये कितना बड़ा है, तो कितना 4 पैराग्राफ में हो जाएगा न्यूज। फिर ये वापस, द रूपी वीकन फ्रॉम 91 to 96, ये इतना लिखने की क्या जरूरत है? रूपी वीकन बाय कितना परसेंट, परसेंट इंपॉर्टेंट है ना, नंबर इंपॉर्टेंट है। रूपी Roughly डेप्रिस 5.5, हाँ, 6%. रूपी परसेंट है, रूपी डेप्रिस 7% है, कुछ 7%, 296 रुपीज। फिर अभी ये डिस्पाइट द गवर्नमेंट ऑब्जर्विंग 75% प्राइस इंक्रीज इन जेट फ्यूल, तो ये तो इसका रीजन तो इधर आएगा ना कि प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। हम्म। तो वो तुमको वो फ्रेम करना है एक प्रॉपर वे में। आंसर क्यों, एक लाइन लिखोगे क्यों, दूसरा लाइन लिखोगे उसका उसका सब, फिर जब सब रीजंस खत्म हो गए तब नए पॉइंट पे जाओ। तो मैं भी और कंसाइज करना है। तीन के 3 पैराग्राफ बना के 9-10 लाइन में पूरा एक्सप्लेन हाँ, करना है। 9-10 लाइन ही बस, 20 सेकंड्स के ऊपर, 30 सेकंड्स के ऊपर यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग। कितने सारे लोग हैं। उसके अभी तो ठीक बाद है। जो अगर पॉइंट खत्म होते हैं तो कंटेक्स्ट वो देना है। हाँ, क्योंकि 1 घंटे में मॉर्निंग कॉल खत्म होता है, ठीक है। हमारा चालू होने का 8 नहीं, 7:30 को चालू होने का 8:30, 8:15 तक मैक्स होने, मैक्स 8:15 तक। और उसमें हम्म। कुछ तुमने ऐसा कुछ बोला ना, इतना बात तुमको नेक्स्ट कल से बोलने नहीं देंगे, तो बात ही मत कर। मैं I'll try to make it concise. हाँ, तुमने अगर क्या होता ना, कैसा होता है, देयर आर टाइम अलॉट है, ठीक है, मतलब ऑटो सेक्टर है, तुम 1 मिनट बात करोगे, तुम 1 का 2 गया, तो क्या होता है, वो लग से फार्मा वाले का टाइम कम होगा, वो तुमको गाली देगा फिर, या फिर फंड मैनेजर गाली देगा कि अरे तू क्या कर रहा है, क्यों उसका क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है तू। Yeah, that's understandable हाँ, completely. तो वो टाइमिंग का बहुत बहुत होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, कि तुम छोटे टाइम में सबसे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्या दे सकते हो, और सब देने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के दो इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है वो इन्फॉर्मेशन। एंड मेक I'll इट वेरी just वेरी क्विक, वेरी क्विक होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, अच्छा I'll खत्म। just quickly wrap up the second article, यस, which talks about the Supreme Court upholding government's decision to impose retrospective 28% GST on full face value of bets made on online gaming platforms. Now, there is just one listed company in this space. नजर आया। Yeah, so this is creating a major financial overhang for the sector. The ruling also has, in a way, reaffirmed the state's power to ban online gaming and betting. The government has made GST demands amounting to roughly $917 billion from the sector and from the gaming sector, and $160 billion from casinos. And it can also double because of penalties and interest. Now, major companies facing large tax exposures include Dream11, roughly 250 to 400 billion, Delta Corp, which is facing $250 billion, and it is listed, Gamescraft at $210 billion, and Games 24/7 at $200 to $210 billion.
So this could significantly disrupt the gaming industry, and many firms are expected to scale down their operations or completely exit the sector. And the bigger impact of this thing is not just that Delta Corp and its business will be impacted. It's also a kind of signaling by the government, like they can ban a sector if they think it is harmful for the public, but in a way they are trying to make money out of the dying business of a company. So instead of imposing retrospective taxes, they could have like banned it and given up on the retrospective tax of it. Sahil, why So are you this talking on this news? because this tarnishes the reputation of, like in case of global investors, they wouldn't want to be very interested in like India. If they are making fresh investment, they'll look at this. This is the second time we have done retrospective taxation. The first time it was with Vodafone Idea. See, it's an update. It's an update. तो ठीक है, मतलब तुम बता रहे हो, मुझे किसी काम में नहीं आ रहा है ये अपडेट तुम्हारा। सर बट मेरे अगर लिए काम ग्लोबल इन्वेस्टर को ये इधर इन्वेस्ट करना है, अगर क्लाइंट भी ग्लोबल है, तो वो ये सब चीजें बहुत ध्यान से देखते हैं ना। बट गेमिंग में हम एक ही स्टॉक है कंपनी लिस्ट कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, न्यूज न्यूज बराबर ही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन है कि इतना टाइम वेस्ट लिखने में क्यों किया? No, see, I agree there is just one listed company, but this has happened even in telecom sector. So that is, it has other listed companies. So this is more on the Indian like equity segment that it can एक सेकंड, impact all other साहिल companies. साहिल, let's talk about our employer-employee relationship. You are my employee, ना मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, ना मैं सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ, तो तुम मुझे ये सेक्टर के बारे में क्यों बता रहे हो? Let's say if I'm paying you, तो तुम्हारा टाइम, तुम पढ़ो, तुम कुछ भी पढ़ो, पूरा न्यूज पेपर पढ़ो, आई डोंट माइंड। क्वेश्चन है ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? और भी तो बहुत सारे न्यूज थे जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता, वो छोड़ के तुम मेरा इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मेरा ये पर्सपेक्टिव आता है, पर तुम No, बता it रहे हो, was क्या बता रहे more on the general market, like हो? because it will affect the inflows of foreign money into India, which anyways moves the stock prices in India. It will impact the foreign, वो तो गेमिंग सेक्टर पे लगा रहा है ना। So that is what I'm trying to explain. The ban is on gaming sector, but this is not the first time that a kind of ban has been placed. Before You this, could it have, has been. so if you have to give an update, you could have searched ऐसा the gaming sector पे 25% they are banning and ये ऐसा ऐसा अपडेट है, बस 10 सेकंड में खत्म न्यूज। इतना 1 मिनट में कोई न्यूज क्यों बता रहे हो? गेमिंग सेक्टर में ऐसा होगा, यहाँ पे एक ही लिस्टेड कंपनी है, डेल्टा कर को ये इम्पैक्ट होगा, वो होगा। हाउ इट इज रिलेटेड टू माय रिसर्च? So what I am saying is, ये एक कंपनी पे इम्पैक्ट इस केस में आ रहा है, बट द सिग्नलिंग इज टू द ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी कि कभी भी गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत कह लो जल्दी रूल्स चेंज कर देती है। इससे पहले भी उन्होंने एक बार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया, तो मतलब दे कैन बी देयर कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया कैन बी डैमेज बिकॉज ऑफ सच थिंग्स। तो ये बाकी सेक्टर्स को भी इम्पैक्ट करेगा, मतलब किसी भी तरीके की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है तो उसको इम्पैक्ट करेगा। यू नो गेमिंग सेक्टर पे क्यों इम्पैक्ट किया है? यू नो रीजन फॉर दैट? Yeah, they गेमिंग have सेक्टर a valid reason. They have a valid reason because like बहुत सारे लोग अडिक्ट होते हैं गेमिंग को, एंड कुछ लोग तो बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियली भी अपने आप को उसमें बर्न कर चुके हैं। तो दैट इज अग्रेड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैन नहीं करना चाहिए, बट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन स्पेसिफिकली वो एक नहीं सेकंड, करना चाहिए। एक सेकंड, तुमने बोला वोडाफोन आइडिया पे हुआ, एयरटेल को क्या इम्पैक्ट हुआ है? एयरटेल का स्टॉक क्या नोज डाइव हुआ है क्या नोज डाइव? They actually benefited, but VI was negatively affected. तो ठीक है ना, वीआई का वैसे भी कितने लोग यूज करते हैं वीआई Yeah, इंडिया में? but if the competition goes down, let's say it becomes a duopoly, then So it, are you a fundamental analyst or are you economist? तुमको ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए या दुनिया भर वो इन्वेस्ट? तो अगर एफआई इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या इंडिया का रेवेन्यू ग्रो नहीं होगा कंपनी का? आज एफआई इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो मेरा रेवेन्यू ग्रो नहीं होगा मेरे कंपनी का, क्योंकि एफआई इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। the revenue growth will be different from like दैट the इज व्हाट, FI व्हाट आर यू? investment. सो डिफाइन, तुम हो कौन? तुम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो या इकोनॉमी एनालिसिस कर रहे हो? तो तुम दुनिया भर की बातें कर रहे हो कि सर ग्लोबली ऐसा होगा, कल वॉर होगा तो इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा,
प्रमोद गवर्नमेंट चेंज हो गया तो इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तुम उसके एनालिस्ट हो या फंडामेंटल एनालिस्ट, कंपनी में एनालिस्ट? फंडामेंटल बट विद लिटिल बिट ऑफ लाइक ग्लोबली क्या हो रहा है उस हिसाब से थोड़ा ग्लोबली अपडेट तुम रखने सिर्फ यही से। बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है, मेरे सेक्टर में एफडीआई इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं मुझे। Oh, तुम्हारा Sir, तो hi, sir. sorry to cut you off, sir. हाँ Can we please go ahead with our link as well, sir? On Yes, the time is remaining only like for us to present. अच्छा यू Yes, हैव sir, टू it गो, अच्छा takes ओके lot ओके। of time. And अच्छा it's सो totally वन सेकेंड, unrelevant news, no? नहीं सो द नहीं मैं Because we are not सी tracking any gaming Sir, segment. sir, सी yesterday also, क्वेश्चन इज यू नो इट इज रेलेवेंट, बट साहिल का प्रॉब्लम है, उसको लग रहा है कि रेलेवेंट है, ओके? yes, sir. No, तो sir, कल sir, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, Sir, I you हो सकता understand. explained it I very think we well. should. I think we should wrap this up. है। हाँ वरना थोड़ा दूसरों का टाइम बहुत वेस्ट हो गया, हाँ होगा देखा नहीं हुआ, देंगे। दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग ऑन। जब तुम कॉल पे दूसरों का टाइम वेस्ट करते हो तो मेरा भी 10 मिनट वेस्ट हुआ है, तो आई बिकम वेरी फ्यूरियस ऑन इट कि तुमने मेरा 5 मिनट वेस्ट किया। सो Oh, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉल में तुम्हारा एक भी सेकंड वेस्ट ना हो, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। Sure, sure. ऐसा है, I'll ऐसा है। take care तो of that. see it happens in the start, others भी guys, it happens in the start, it takes time, but once you know it comes into flow तो सबको पता है कि बात क्या करनी है। तो शायद से शिवांशु तुमको नहीं लगता होगा कि ऑब्वियसली यू मस्ट बी इन अ डिफरेंट वेज, बट बाकी लोग को ऐसा लगता होगा कि ये लोग राइट बोल रहे हैं, इज व्हाट इज माय जॉब टू डू इट, ठीक है? Yes, hi, sir. Rishabh. Actually, I received multiple messages on WhatsApp ki, क्या? you should go ahead because my hand was raised. That's why I told you, sir. अच्छा I'm अच्छा really ओके sorry, but hi, Rishabh, Sir, can sir. I? या These 4 days I was not able to present my news, and I want to do it today. I have to start it someday, so I want व्हाट? to do it. Can I please? Yeah, so everyone will get a chance. No? I'm not cutting off the call. I Sir, thought it's sir, already 11. sir, I was next. Shivanshu was next. See, I give you, Anula, I am giving people chances based on what time did they send. What time did you send the news? Maybe around 9:40 or something. I have not even read your news. 8:30 is the time that you send. 9:45 market opens, everything closes up. So Yes. I am giving chances for the people who have sent the news first. So obviously they have the chance to get started first. Okay, I agree. Okay, got it. Yeah, Shivanshu. Sorry, Yes, Shivanshu. sir. Shivanshu, तुमको जाना है क्या? Do Sure. you work somewhere, Shivanshu? Yes, sir. Actually, I really had to go. So, Oh, okay. So always text me, Shivanshu, on the chat. Okay. Yes, sir, I have no, to sir, leave no, just no next worries. week. Okay, fine. Sorry, No sorry. worries. Sir, Sorry actually, about आज off था, right? हाँ आज तो हाँ बंद है, okay. so Sorry, actually I had sorry. to go someplace. Sir, can I Yeah, quickly sure. start with the Yeah, business sure. update that I Always. sent you the screenshot yesterday as well? Yeah, go ahead. Yeah, yes, sir. So good morning, everyone, and good morning, sir. So yesterday we saw not so much movement in the Nifty, but our portfolio stocks saw a massive movement. Starting with the gainers, the JP Power gained at 20%, mainly because of the news of the Adani Power signing a definitive agreement of acquiring 24% stake in a deal worth 4,000 crores. Again, companies like NDTV, Sun TV, and Nifty Media companies, which were the index was up 3%, and these were momentum stock that grows to at least 10%. NDTV, Sun TV rose 4%, and Saregama rose 5%. HFCL rose to almost equivalent to 7.5% because they bagged an order from RailTel worth 135 crores. Tata Motor passenger vehicle again rose to 4% and has been continuously rising at least 10% in last 5 days, mainly because of the new launches that the company is planning. The 3 variations in the new Tata Tiago that the company was planning to launch today. Now talking about the losers, the major losers of a portfolio stock were Reach My Trip and Yatra. Again, due to the news that you said, while the Prime Minister Modi told to avoid unnecessary foreign travel, overseas vacation, and weddings as well. Red Tip was down. It was up yesterday, but it was yes, sir, Red Tip was down at least 5%, mainly due to the margin pressure. The quarterly results were down as well, although the yearly results were better. And Avanti Feeds was down as well due to the article that came on the Mint yesterday. The Hormuz trade pressure that would put on the margins of the companies. For example, like Avanti Feeds, Apex Frozen Foods were also down a little, and these industries usually have a margin of 4 to 12%. And EID Perry was down again. I think it was down yesterday as well, at least 8 to 9% because of the poor result
and the main segment which drives the revenue of the company, which was down 22% as well. So this is just for the portfolio update of the company of our company. I would like to start with my news. It is available on Business Line, page 11. My topic of the news is the capacity expansion backed by growth. TVS Sri Chakra 2 billion investment plan. So this company TVS Sri Chakra is planning a 2.2 billion expansion plan in the two-wheeler and three-wheeler tire manufacturing, and their capacity plan includes as follows. First would be the two-wheeler and three-wheeler plant. Their current capacity stands around at 210 to 235 lakh tires per annum, with the current capacity utilization standing around at 80 to 85%. They are planning to increase the capacity by 5%, reaching to the 220 to 245 lakh tires per annum. And the timeline that the company has given would be around 2027 for financial year 2027. And the investment allocation would be around 1.1 billion crore, half of the total expansion plan that they are planning. The second segment that they are currently expanding is the heavy duty. The current capacity of that segment is 75 to 80 tons per annum. So heavy duty tires are judged on the basis of per annum or tons per annum, and the two-wheelers and three-wheelers tire manufacturing are judged on the number basis. The current capacity of heavy duty tires stands around at 75 to 80%, and the company is planning to expand to at least 25%, reaching towards the 105 tons per annum. The timeline again the company has given almost FY28, and the investment would be 1.1 billion. So the total investment contribute towards 2.2 billion, and the company is funding the both the capex via internal funds and the debt. Currently, company doesn't have much cash or investment to fund these investments. That's why I think the company is taking the debt route. So what I am seeing is we are seeing a huge wave of capex across multiple players in the tire manufacturing space in the India. So this was not available on the newspaper. I have done extra research on that. So overall, in the few months, in at least 6 months past, we have seen a 154 billion fresh capacity and capacity expansion across multiple segments. First would be CEAT. CEAT is planning to expand 45 billion into the tire manufacturing segment, reaching from 24,000 tires per day to 40,000 tires per day, which is a 66.7% increase year on year. Apollo Tyres is hoping to expand from to 58 billion. Currently, they have a capacity of 7.1 million in PCR tires and 1.6 million in TBR tires. PCR is nothing but passenger cars, and TBR is for heavy duty cars, and they are expanding towards at least 25 to 30% with a total capex of 58 billion. And TVS Sri Chakra is 2 billion. I've already told in depth about the company. And JK Tyre is planning to expand at least 49 billion, with the current capacity standing somewhere around 210 lakh, which was available in the investor presentation, with the expected capacity to increase up to 250 lakh tires per annum. So my conclusion is we can see that there has been a robust growth in the tire manufacturing industry. Now they will be catering to the automobile industry as well. So are we seeing the growth in the automobile sector? Which is yes. You can see that TVS Motor is also TVS Motor. So these are selling tires to the B2B business. I know, sir, this is a B2B business, and actually I picked the news later, so I thought I should avoid it, but I have presented it. I have created it, so I'm just presenting it to you. So we can see the automobile manufacturing companies such as TVS Motor, Hero MotoCorp, Royal Enfield, and Tata Motor Passenger Vehicle. They are also planning a 20 billion crore, 15 billion crore, and 22 billion crore capex plan for the further manufacturing and scale up of the automobile industry as well, respectively. And sir, if you just a second, and if you look at the share price of TVS Sri Chakra as compared to yesterday, it was up 12%. Apollo Tyres was up 1.6%, and JK Tyres were up 4.6%. Thank you, sir. Himanshu, no harm in saying this news. B2B in news. So this news wasn't related. मतलब जब तुम news बोल रहे थे, so I was thinking from an automobile perspective. You know what was my thought?
व्हेन यू saying this न्यूज कि अगर Yes, sir. टायर्स में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली कार्स उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं तभी वो कर रहे हैं, Yes, sir. करेक्ट? सो Yes, ऑर्डर्स sir. आ रहे हैं तो यस इट मींस द डिमांड इज स्ट्रांग, जबकि ऑर्डर्स आ रहे Yes, हैं। sir. Yes, तो sir. एंड स्पेसिफिकली तुम टीवीएस सीरीज की बात करो तो इट इज मेजरली इनटू टू व्हीलर्स टायर्स। Hmm. सो Yes, हम तो sir. टू व्हीलर पे मैं तुमको बोला था ऑलरेडी वी आर बुलिश क्योंकि वो स्कूटर सेगमेंट इज ग्रोइंग, Yes, sir. ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो हाँ, sir. यस, तो दैट इज अ गुड, मतलब ये न्यूज अच्छा ही था। अच्छा, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, ये इतना बड़ा हो चुका है ना, तो थोड़ा रीडिंग, आई डिडंट रेड योर एंटायर न्यूज। अभी क्यों नहीं रीड किया? Yes, इट इज sir. नॉट बिकॉज इट वाज बिग, इट वाज नॉट फॉर्मेटेड वेल। तुम ना ये 1 to 1 है, इट यू डोंट हैव टू राइट दिस, तुम उसको ना पैराग्राफ में ही लिखो। इट शुड बी लाइक अ स्टोरी, इट शुड नॉट बी लाइक पॉइंटर्स। Yes, sir. मतलब एग्जांपल, इफ आई टॉक कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ, दिस इज नॉट द हेडिंग शिवांशु। कैपेसिटी एक्सपेंशन बैक ग्रोथ, मैं लेट्स से मुझे ये पढ़ना है तुम्हारा और मुझे एनालिसिस करना है, तो Yes, क्या sir. क्या एनालिसिस करूँ मैं इससे? सो टीवीएस रीच टू इन्वेस्ट 220 crores in investment, 2.2 billion, 2.2 billion in इन्वेस्टमेंट प्लान। नहीं, दिस इज नॉट द हेडिंग। क्या मैंने Yes, क्या sir. प्लान, क्या क्या कर रहा है टीवीएस? Sir. टीवीएस रीच अनाउंस, ये भी नहीं, यू डोंट यूज दिस वर्ड। टीवीएस रीच टू एक्सपांड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन तमिलनाडु विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.2 बिलियन। तो ये तुम्हारा हेडिंग चालू हो गया। तो अगर ये Yes, sir. हेडिंग होता तुम्हारा तो आई वुड हैव बीन मोर एक्साइटेड टू रीड, पर तुम्हारा ये हेडिंग पढ़ के मैं बोला छोड़ जाने दे, तुम जो प्रेजेंट करेगा तब सुन लूंगा। ठीक है, sir. फिर ऐसा होता है। ओके, Yes, sir. सो दिस इज द हेडिंग। हाँ, क्यों ये, दिस कैन बी एन एंटायर हेडिंग। ओके, यू कैन टीवीएस इज टू इन्वेस्ट 250 बिलियन फॉर एक्सपांडिंग 2 and 3 wheeler हैवी ड्यूटी टायर्स। ये तुम्हारा हो गया हेडिंग। Yes, sir. ठीक है, बस इतना ही हेडिंग। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग वन किधर है, क्या है, वो ऊपर लिखने की क्या जरूरत है? वो तो इंडिया में किधर भी हो, क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। तो तुम तमिलनाडु अवॉइड कर सकते हो लिखना हेडिंग में। ठीक है, टीवीएस sir. चक्र टू इन्वेस्ट 2.2 बिलियन इन 2 व्हीलर and 3 wheeler हेवी ड्यूटी टायर्स। हो गया, ये तुम्हारा हेडिंग हो गया। फिर हाँ, Yes, जब sir. तुम बोलते हो एक्सपेंशन प्लान क्या है तो क्या कर रहा है, तो ये तुम, so the TVS structure is expanding into, so the current capacity of the TVS is at 210 to 235 lakhs with a utilization which standing है। अच्छा, अभी है तो इंक्रीज कितना होने वाला है? Sir, वो 220 next बिलियन से। line में बताओ. हाँ, तो वो इधर ही आना चाहिए ना। करंट कैपेसिटी इज 210 to 235 which is they are planning to expand to 220 to 245 because your news is related to 250-20 investment to 2.2 billion investment। तो एज एन एनालिस्ट मेरा थॉट प्रोसेस होता है कि कितना कितना कैपेसिटी बढ़ेगा। Yes, sir. फिर तुम्हारा ये 210 से 220 होगा एग्जांपल, विच इज एन इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेट 5%। सो आई, तो ये तुमने लिख दिया। फिर द करंट यूटिलाइजेशन स्टैंड एट 80 to 85%। ओके, Yes, sir. ये लास्ट में आएगा। फिर हाँ, ये भी आया सर, ये भी भूल गया कि द कैपेसिटी इज इट विल बी ऑपरेशनल बाय 2027। तो मैं ना, जब मैं मॉडल बनाता हूँ मेरे, तो मेरे दिमाग में ये नंबर ऑलरेडी आ गया कि 245 मिलियन का इसका कैपेसिटी होगा बाय 2027 with an Yes, sir. occupancy, with an utilization of 85%. So 245 into 85% gives me the total volume to be sold into the Yes, sir. price. मेरा मॉडल बन गया उधर, रेवेन्यू फोकस्ड हो गया। Hmm. बट तुमने ये ऐसा लिखा है ना, तो तुम खुद भी कंफ्यूज होगे कि लिखना क्या। Yes, sir. गॉट इट? अभी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन विल बी अराउंड 110। अभी ये क्या था, ये बीच में कहाँ से आया? व्हाट इज दिस रिलेटेड टू? सर, ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट से रिलेटेड है और फिर वो हैवी ड्यूटी का अलग कर रहा है। इसके हाँ लिए तो 110 करोड़, उसके लिए 110 करोड़। हाँ, तो मुझे कैसे समझेगा ये क्या है? So heavy duty tire expansion, which they have allocated around 110 crores with a current capacity of 775 and utilization of 70%। फिर कैपेसिटी सेम वापस वैसे ही, हेवी ड्यूटी टायर्स में क्या कर रहे हैं, 100 करोड़ इन्वेस्ट यस कर सर। रहे हैं, उसमें से पहला कैपेसिटी इतना था, अभी इतना करेंगे, विच इज इंक्रीज अप टू 25%, विच स्टैंड्स यूटिलाइजेशन ऑफ 75 to 85%। और कब होने वाला है? एक्सपेक्ट टू कंप्लीट बाय FY 20। तो 28 के भी नंबर्स मेरे पास आ गए। यस सर। ओके, और ये इन्वेस्टमेंट लोकेशन 110 विद द कंपनी एमिंग टू स्ट्रेंथन देयर होल्ड, ये क्या है वापस? ये कौन सर सा ये एलोकेशन? सर ये हैवी ड्यूटी वाले में है कि वो मेरे 110 ख्याल से करोड़ करके। 110 इसमें था, 110 इसमें था, ऐसा अलग अलग था। हाँ, ऐसे ही है सर, ऐसे ऐसे ही। हाँ, तो अभी देखो, मुझे समझ रहा है रीड करते हो? नहीं नहीं सर, मैं समझ ना? आपको फोटो जेपीजी भेज सकता हूँ क्या? क्योंकि सर इसमें ना पॉइंट डाले थे तो वो व्हाट्सएप में डिफरेंट हो जा रहे हैं, एबीसीडी आ जा रहे हैं। मतलब मैं वर्ड में नहीं, लिख बट रहा हूँ तो पॉइंटर्स वैसे। इसके लिए व्हाट्सएप पे तुम भेजते हो ना, ये कैसा होगा? अगर तुमने मुझे वर्ड में भी भेज दिया, क्लाइंट हाँ, स्पेसिफिक रोल कैसे होते हैं, वो कोई तुम्हारा वर्ड फाइल खोल के नहीं देखने वाला। ये देख लो, तुमको व्हाट्सएप पे ही भेजना है।
ठीक कि है जब तुम तुम्हारे मैनेजर से बात करके, ये न्यूज कब आते हैं? 8 बजे, ऑफिस चालू होने के पहले की न्यूज है ये सब। देयर इज नथिंग ऑफिशियल इन दिस, इट इज जस्ट अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट्स। यस सर तो तुमको पॉइंटर्स में लिखना ही नहीं है। पॉइंटर्स एकदम रेयर केस में पॉइंटर्स है, जब तुमको पता है कि इसका सिर्फ एक गाइडेंस, जैसे ना गाइडेंस दिया 20%, तो उसका कुछ हाँ पैराग्राफ सर नहीं बनता है, तो वो पॉइंटर है। और else, हम्म ये सब लिंक्ड है ना, मैं तुमको पता है ये सब एक पार्ट था, दिस वाज वन पार्ट। तो तुम्हारा यस दो सर पैराग्राफ तो हो, और मुझे क्लियरली न्यूज समझ है, तुमको भी समझता था न्यूज। अब ये प्रॉब्लम में क्या होगा, जब तुम्हें वापस पढ़ोगे ना, जस्ट इमेजिन जब तुम्हें वापस पढ़ रहे हो, तुम खुद ही नहीं पढ़ोगे इतना बड़ा न्यूज। यस सर तो वो ऐसा है। फिर वापस यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ बैक, अब ये वापस क्यों आया? सर वो मैंने डबल भेज दिया है कि वो मैंने नीचे सही लिखा था। यहाँ पे अलग लिखा है, प्लान एक्सपेंशन टाइमलाइन, ये सब नहीं, ऐसा हाँ नहीं सर लिखता है। ये सब नहीं है। यस सर ठीक ठीक ये कैसे लिखा, ये तुमने कैसे लिखा? दिस इज परफेक्ट, इतना ही सर लिखना था। ये मैंने वर्ड में लिखा है और फिर को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया नहीं, वो था। नहीं, जो फॉर्मेट है वो इतना ही होना चाहिए, दिस इज द फॉर्मेट। और इस पे हाँ सर हेडिंग, इस पे हेडिंग। ओके, ठीक है क्योंकि ये जब तुमने ये प्रेजेंट किया ना, तो ना शिवांशी, तब मुझे समझा, अरे हाँ यार, तुम बड़ा ये सब तुमने बराबर प्रेजेंट किया। सीएट का मुझे पता चला, अपोलो का पता चला, जीके टायर का पता चल गया, यस सर बट मुझे जो ऊपर तुमने बोला वो कुछ पता नहीं चला। इट इज बिकॉज श्योर सर फॉर्मेट ही गलत है तुम्हारा, लिखते हो। ठीक है ओके, अदरवाइज दिस वाज यस गुड न्यूज, दिस वाज अ गुड न्यूज। ओके, फाइन। तो याद रखना, यस जस्ट सर मेक श्योर कि थैंक वो पैराग्राफ में ही हो। यस सर फॉर ओके, थैंक यू सर Mukesh, you want to present the report, now? So you'll wait. Then, Yes, sir. okay. So, Rahul, Do I present it now? one second, is everyone done with the newsletter? Okay, okay, yeah. Hello. Rahul? Yeah, Rahul. Yes, sir. Sir, my news is on the Financial Express, page number 19. Okay. Go ahead. Go Uh, ahead. then my news is 9 years of connectivity revolution, building the foundation of $1 trillion in Uttar Pradesh. Sorry, Sir, sorry, come again. Sorry, come again. 9 years of connectivity revolution, building the foundation of $1 trillion investment in Uttar Pradesh. Okay. Sorry. Sir, Uttar Pradesh is India's most populated state, is rapidly emerging a national logistic manufacturing and export hub, driven by a large scale of investment in expressway, freight corridor, airport, and inland waterways. The state infrastructure-led transformation is improving connectivity, lowering logistic costs, and accelerating industrial competitiveness, positioning up as a key engine of the next economic growth cycle. The key highlights are there are 111 national highway, 16,000 kilometer of rail network, 90 national highway passing through the state, 115-kilometer eastern dedicated freight corridor, 17 are operational airport, and 12 are under development. Metro connectivity in Lucknow, Noida, Ghaziabad, Kanpur, Agra, and Meerut. 10 strategic expressway transforming connectivity. And the investment opportunity is 50 lakh crore investment proposal, 10 lakh, 10 crore employment opportunity नहीं, generated, ठीक है, and ये इसकी 60 lakh. जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। 10 का एम्प्लॉयमेंट, तुम मेरे को Okay, रोड से इंटरेस्टेड है, रोड्स में क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम वेटिंग, तुम लास्ट में कुछ बताओगे। uh, एम्प्लॉयमेंट से कुछ लेना देना नहीं। okay, sir. Okay, sir. हाँ, And sir, listed company which are benefited from UP infra boom. And first is Minda Corporation, investing 522 crore near Yamuna Expressway for manufacturing expansion, and Bharat Electronic Defense Corridor manufacturing ecosystem. Hindustan Aeronautics, aerospace and defense manufacturing opportunity, data pattern, defense electronic and एक सेकंड, एक supply. सेकंड, ये सब इतना सब क्यों बता रहे हैं मुझे तुम? क्या करूँ मैं सब सर, चीजों का? बेसिकली मैं ट्रैक कर रहा था कि किस किस कंपनी को मतलब एडवांटेज होगा तुम्हारे और पास सिर्फ किस किस. 30 सेकंड, तुमको पता रहा, ये 30 सेकंड, इतना सब कुछ बताना कितना याद रहने वाला है मुझे इतना से बताने के बाद? ओके सर, मेजरली लेस. तो सर, क्या इंपॉर्टेंट है? और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बूम हो रहा है, यही न्यूज था राहुल। यस इंफ्रास्ट्रक्चर सर. प्रोजेक्ट बूम हो रहा है, इतने सारे डेटा पॉइंट्स का क्या करूँ मैं? एनीथिंग टू रिलेट, कहाँ पे यूज भी होगा ये डेटा पॉइंट मुझे? रोड्स कितने बन रहे हैं, हाईवेज कितने बन रहे हैं, फाइन।
वहाँ यूपी में इतने रेज हो रहे हैं, अभी आगे हो गया, 2 सेकंड 2 लाइन में हो गया। अभी क्या करो? अभी डेटा का मुझे बताओ, जो तुमने बताया वो डेटा का मैं करूँ क्या? कहाँ पे यूज होगा वो डेटा? नहीं बता ना, ओके तुम सर। बता रहे थे बराबर था, बता रहे थे बराबर था, बहुत बता रहे थे, वो प्रॉब्लम है। बता बराबर रहे थे, बट बहुत कुछ 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 इतना सबका करूँ क्या? 1100 हाईवे है, 16 किलोमीटर रेलवे है, नेशनल 90 नेशनल हाईवे, 12 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, बस हो गया। अभी इसका हाउ हाँ इट इज सर, बेनिफिटिंग? हाँ, बेसिकली अगर मिंडो कॉर्पोरेशन is invested in Yamuna Expressway, then their logistic cost is come down because it connected to the Western Expressway. हाँ तो So sir, it increase the margin when there is a decrease in logistic cost. ओके फाइन। और Uh, and the company are getting positive impact is for road EPC for PNC Infra, and the cement for Ultratech and Sheer Cement. Sheer Cement is also invested 892 crore in Uttar Pradesh plant, which is Itaha, and the logistic corridor Concord, Delaware, Adani ports are positively impacted because of smooth roads and connectivity. तो राहुल, ये तो कोई बता सकता ना, इसमें क्या अलग बता रहा हूँ? ठीक है फाइन, मतलब पता है, नो नो इशू इन दैट, दैट यमुना एक्सप्रेस वे बने, ये बने, वो बने, इसके वजह से उनका कॉस्ट कम होगा अभी। ओके फाइन। कितने कंपनीज के बारे में तुमको पता है दिलीप बिल्डकॉन क्या करता है? यू नो सी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट के सीमेंट कितने में आते हैं? डू यू हैव टू फोकस ऑन कॉस्ट परस्पेक्टिव? तुम्हारे अगर मैं बोलो तुम बोले सर मुझे लाइफ में ग्रो होना है, मतलब राहुल सब खर्चे कम कर दो, जीरो कर दो खर्चे। इज दैट यू व्हाट ग्रोथ? No, sir. तो ग्रोथ फोकस किसका होना चाहिए? फोकस किसका होना चाहिए? मतलब ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा न्यूज़ खराब है, कि न्यूज़पेपर में मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि न्यूज़ खराब है। क्वेश्चन है कि ये तुम मुझे बता क्यों रहे हो इतना सारा Sir, डेटा पॉइंट्स, जबकि मेरे पोर्टफोलियो में तो इसमें से कुछ भी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, नॉर आई हैव टोल्ड यू टू फॉलो दिस सेक्टर। Sir, basically, if you are my client and you want to make a Uttar Pradesh basket or infra basket, so I prefer you these stocks. बट इंफ्रा में इन्वेस्ट बोला ना, मैं इंफ्रा में इन्वेस्ट नहीं करता ना, बट तुम मुझे क्यों बता रहे हो? Okay, sir. तुमको पता है मैंने वो मॉडल्स दिए तुमको बनाने को, ऑटोमोबाइल के, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. तो क्यों दिए? बिकॉज आई एम इन्वेस्टेड इन दैट। ओके, तुम्हारे पास अगर ये सब कंपनीज के ना मॉडल्स है, ना कंपनी रिपोर्ट है, ना कुछ है, तो ये बात करके का भी कोई मतलब नहीं है। डू यू थिंक ये न्यूज़ के ऊपर से मैं पूछूंगा, ठीक है बता भारत इलेक्ट्रिक करता क्या है? Hello. हेलो, हेलो, Hello. आई विल Yes, sir. आस्क यू, आई विल आस्क यू, बताओ भारत इलेक्ट्रिक करता क्या है? बताओ हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक में फर्क क्या है दोनों में? तुमने मॉडल बनाया कभी? कभी सेक्टर ट्रैक किया है? कभी कोई न्यूज़ पढ़ी है इसके बारे में? कभी No, क्वार्टरली sir. नंबर अटैक किया है? तो फिर सिर्फ कितना टाइम लगेगा तुमको उसको रिसर्च करने में? गलत नहीं है इसमें? और डू यू थिंक हाउ मच टाइम विल इट टेक टू जस्ट अंडरस्टैंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स? Okay, sir. मुझे I लगा, understand. मुझे लगा तुम हाईवेज पे लेके होटल्स पे आ जाओगे, कि यूपी में ऐसा ग्रोथ हो रहा है तो होटल सेक्टर इम्पैक्ट होगा। आई थॉट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, एंड दिस इज, Yes, मैंने बोला है, आई हैव टोल्ड यू सी फॉर्मेट, फॉर्मेट, लुक एट द फॉर्मेट, मैंने कैसा लिखा है। मेरा ऐसा है क्या? मेरे लिंक्डइन आईडी पर दिया है ना मैंने, उसमें ऐसा लिखा है मैंने कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डेटा पॉइंट्स आर ऑफ लिटरली नो यूज। इसमें से मुझे ये यही इंपॉर्टेंट लगा। 111 हाईवेज है, 16,000 रेल नेटवर्क है, 90 हाईवेज है। ठीक है, ये तो इकोनॉमिकल डेटा हो गया, तुम्हारे फोकसिंग में काम आएगा ये? no, sir. तो फिर क्यों बता रहे हो सर? जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। दिस ऑल एआई रिलेटेड, ये तुमने नहीं लिखा है, तभी एआई नहीं लिख के दिया तुमको, क्योंकि न्यूज़ में तुम ऐसा कुछ नहीं करते। इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। पॉइंटर ये तुम कॉलेज में नहीं हो, राहुल।
तुम एक 10 साल सीनियर आदमी से बात कर रहे हो, शायद से तुम एक 20-25 साल सीनियर आदमी से बात करोगे इन द फ्यूचर। उसको ये सब नहीं चाहिए। उसको ओके तुम सर। 4 लाइन ही दो, वो अच्छे चल जाएंगे 40 लाइन देने से अच्छा। सर ओके एंड सर। स्पेशली इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जब तुम जॉब पे जाओ तुमको समझना चाहिए कि तुमको काम किस पे करना है। बिकॉज कल तुम जॉब पे जाओगे तो सर मुझे अच्छा लग रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बिकॉज तुम फ्रेशर हो। यस सर, यस सर। तुमको क्या होगा ना, तुमने वो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि तुम इंफ्रा के लिए जाओगे, तुम बोलोगे सर मैं आप इंफ्रा कर रहा है, सर ने मुझे इंफ्रा करने दिया नहीं। बट हमारा कंपनी अगर कर ही नहीं रहा है एंड तुम खुद से करने जा रहे हो, तो उसका क्या क्रेडिबिलिटी है? नो यूज सर। नो यूज। वो प्रॉब्लम होगा इंटरव्यूज में। फिर ऐसा होगा कि चलो तुमको एक सेक्टर ट्रैक करना है, तुम्हारे सर ने बोला करने को, तुमने किया तो तुम वो किया तो ये भी कर सकते हो। ऐसा होता है। मतलब मैंने जब फार्मास्यूटिकल सेक्टर चालू किया तो मुझे नहीं आने का फार्मास्यूटिकल सेक्टर ट्रैक करना। बट सिंस मुझे ऑटो आने का, तो इट वाज अज्यूम कि चलो इसको फार्मा भी ये कर लेगा। ये होता है। ठीक है। ओके सर, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। हाँ, तो मेक श्योर यू टेक एज मच एज नॉलेज दैट आई हैव, rather than saying something which is मुझे भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है। ऐसा है। क्योंकि मुझे पता है पर्सनली, ये सब रिसर्च करने को मैं तुमको पहले बोला, तुमको पूरा इकोनॉमी पता होना चाहिए, गवर्नमेंट पता होना चाहिए, कितने ऑर्डर्स है क्या है। ये सब टाइम है क्या तुम्हारे पास करने? मिलेगा भी नहीं इतना सब डेटा। ये होता है। ओके ठीक है, सर, मतलब रैंडम स्टफ पे नहीं ट्राई करो। मत करो। क्योंकि फिर वो कोई बोला ना कि तुम्हारे जो एफर्ट्स है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे। सब जगह यस सर। एफर्ट्स आ रहे तुम्हारे। तो सब यस जगह सर, एफर्ट यस। जाओगे तो फिर इंटरव्यू में वही प्रॉब्लम हो जाएगा, कह रहे तुमको तो ये कर रहे हो, खुद एक चीज के बारे में पता नहीं और 10 चीजें ट्रैक कर रहे हो। मैंने बोला 3 सेक्टर है, 3 या रिटेल है, उस पे बात करो, प्रोडक्ट्स पे बात करो, फाइन डेफिनेटली। ये शिवांशु ने बात किया। शिवांशु ने बात किया टायर्स पे, यस इट वाज रिलेटेड टू ऑटो। ऐसा कुछ है तो भी चल जाएगा कि कुछ तो रिलेटेड है। कि सर अगर इसके इम्पैक्ट, जैसे मैंने अभी एयरलाइन फॉलो किया, अभी एयरलाइन सेक्टर इज नॉट टू बी फॉलोड, बट तुम इंडिगो फॉलो करो, इंडिगो के बारे में कुछ पता, मुझे पता है इट विल इम्पैक्ट द टूरिज्म सेक्टर। ऐसा। ओके। ओके सर। बराबर। ओके सर, थैंक या रमन। Good morning, sir. Actually, हाँ I had the news on Ola. Other news are already discussed. That's why. हाँ, ठीक है बताओ। Yes, sir. So Ola is officially entering the commercial EV market. The company has secured ARAI homologation for its brand new L1 category electric scooter that they have received the approval from ARAI, and it's hitting the roads as early as Q1 FY27. So why is this important for Ola as a company? This is because it's actually not a regular commuter scooter. It is specifically designed for gig economy workers. Okay. For example, the Swiggy delivery boys and Rapidos, Zomato delivery boys and all for them. Mm. So it features a 4 kilowatt motor, top speed around 70 kilometer per hour, Okay. and we all know that B2B commercial. This is actually a B2B segmental thing, but since we deal in auto sector, that's why the B2B commercial segment uh, offers something that the consumer market doesn't. High predictable revenue visibility would be there. Big fleet buyers like Zomato and Swiggy operate on high volumes, and they might become repeat customers as they scale. Okay. And Okay. So what is as your view? हाँ. uh, uh, from my perspective, sir, I think Ola would benefit if anyone invests in right now. I mean, this is the right time to invest in Ola because we have recently seen that the margins for Ola has also performed better. Ola, which once topped the market share in EV scooters, two wheelers, had a drastic fall in February 2026 to around 4%. But recent data also shows that the last month's number also shows that it has regained its market share to around 8%, selling almost between 12,000 to 15,000 units. And this increase in commercial vehicles, uh, the revenue would also increase for Ola, Mhm. showing that the
capital expenditure is not there, but the fixed cost remaining same and the revenue growing in volumes would actually improve their margins as well. ओके सो रमन ये प्राइसिंग दिया है क्या इसका क्या प्राइस पे निकाल रहे कमर्शियल ईवीज नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया, बट दे आर सेइंग कि ये इट वुड बी मच बिलो द एवरेज लेवल्स फॉर कमर्शियल व्हीकल्स. ओके फॉर द गिग वर्क करके मतलब सस्ते में निकालेंगे यस सर. लॉन्च एक्सपेक्टेड इन अर्ली Q1 FY27 And sir, one more thing. Ola has also mentioned, the company has also mentioned in the recent conference call that the vehicles for this year, all the vehicles will be integrated with their own cells, own batteries. own batteries okay okay Yes. okay fine great हाँ तो उनका वो चल भी रहा था ना लास्ट टाइम दे आल्सो सेड दैट दे आर कमिंग अप विद अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ Yes, EVs sir. Yes, sir. okay So I believe that, and as soon as the news was out, sir, yesterday, Ola had opened on normal flat morning session during the morning, but as soon as this news came, Ola ended up with gaining 4.42 percentage. अच्छा ओके देखो मार्केट कैप कितना हो गया ओला का इट इज अराउंड 16,000 Yes, sir. and what about एथर का कितना है एथर का 30,000 है ठीक है फाइन फाइन ओके गुड वन Thank you, sir. बाकी भी अच्छा है बाकी के न्यूज़ भी अच्छा है पर मुझे बाद Thank में you. कॉल करो 2 बजे के बाद फिर वो दूसरे नंबर पे कॉल करना ठीक है Sure, sir. Yes, sir. कुछ हुआ तो वो नंबर पे यू कैन कॉल Yes, sir. Thank you, sir. एक्चुअली आई एम नॉट वेल आई एम इन मुंबई तो मुझे थोड़ा नेक इश्यूज हो गए सो आई बी इन द हॉस्पिटल Okay, okay, sir. Okay. So, should I call or should I not? नहीं कॉल करो करो नहीं तो इसके लिए आई एम नॉट ना वो एक्सेसिबल उसके बाद में एक्सेसिबल नहीं होता तो कॉल करो तो आई विल टेक योर कॉल Okay, okay, sir. Yes. Thanks. या अनुला अनुला Yes, hi sir, good afternoon. हाय गुड आफ्टरनून So I'd like to apologize. Actually I forgot कि 8:30 बजे भेजना होता है और मैंने eventually जानबूझ के 9:45 को भेजा because I was occupied in other work. So I'll make sure it's on time from tomorrow. Yeah. Okay. So my news is about Bata itself. I think it was Aditya who covered it earlier. सॉरी My news is about Bata India. Yeah. It was I guess Aditya who covered it earlier. yes yeah go ahead So the news is from page number 9 of Mint, Urban Cities Edition. And to start with, I'd like to just give a quick read on the news. Bata profit have plunged 95% in March quarter. Footwear maker Bata India reported a 95.2% year-on-year drop in consolidated net profit to 2.2 crore in the March quarter. you don't speak in Hurt by crores you the speak in billions and millions तो मैंने बोला था वो फर्स्ट और सेकंड में actually for today, I'd like to speak in crore because I'm still confused in my mind about billions or millions. अबाउट सॉरी वो बिलियंस और मिलियंस का कंफ्यूजन अभी भी है मेरे दिमाग में. मैं बोला था ना मैंने बताया था क्लास में किसी का हाँ आपने बताया था बट वो प्रैक्टिस नहीं हुआ है अभी मुझे. तो वो तो इम्पोर्टेंट है वरना तो वो तो जल्दी मतलब जल्दी इफ यू से लाइक करोड्स लेट्स से आई एम फ्रॉम यूएस मुझे समझेगा नहीं तुम क्या बात कर रहे जल्दी I will try to make it maybe Yeah. from tomorrow. Yeah. Okay. So Bata incurred VRS cost of 28 crore and a non-cash forex loss of 22.4 billion, I guess, due to a restatement of financial liability towards royalty and currency fluctuations in the quarter, according to exchange filing on the Wednesday. In January, the company had approved a VRS option for workers at its Bata Shatak unit in Hosur, Tamil Nadu. The company has rolled out similar schemes across manufacturing units in recent years and has also shut some facilities. Bata posted a volume-led 4.9% Anula revenue growth. you are not reading news you are interacting there is no Okay. interaction in the news Okay. So if I talk stop you have to only talk about 4 paragraphs that are important nothing else apart from 30 seconds no one is listening to you which are the okay. most important point that you think from a growth perspective that you need to speak on Okay.
speak again. Start again. Okay, so I'll start with the this what I've shared with you. So the news is about the declining numbers of the profiters which have just hit the Bata's stock price and as well as the profit sharing of the company. So the main reason this news is sharing is that about why the profits have declined. There are two reasons. One is that they have recently implemented the VRS scheme. VRS scheme is generally about cutting the cost and asking the old employees and some other employees to take their retirement benefits and leave the company. So in short, that means. So this has impacted company to bear the extra cost, which is obviously one time because maybe same employees will not be going again in future. And the second is the import. Bata every year, every quarterly have to pay royalty to their actual company owner. Because Bata is not an Indian company, they pay royalty to No, the don't explain. Don't explain things. Present. Explanation नहीं चाहिए. What is So the news about? You perfectly started with Bata's revenue decline. It was the VRS scheme. That is the only thing I recollected. Now what? What is the second point? हो गया. VRS scheme I understand. As an analyst, I understand what is VRS. Don't try to explain क्या है वो कैसा है. अभी now what is the second point? sorry. One point I understood, you started with the Bata's profit decline 95%. It was due to the one-time effect of VRS expense. Yes, Got it. that is because of those VRS expenses जिसकी वजह से profit impact हुआ है, हाँ highly हो गया. impact. समझा मुझे वो. अभी आगे. और दूसरा न्यूज ये भी है, इम्पोर्टेंट है वो भी, कि इंपोर्ट का जो कॉस्ट आ रहा है अभी फिलहाल, इंपोर्ट ड्यूटीज जो बढ़े हुए हैं वो आगे भी जाके बढ़ने ही वाले हैं. English. Speak in English. Speak in English. Sorry, shall I Speak in speak it English. again? No, speak in Okay, English. Speak in yeah. English. So what I was saying is that the import cost which have recently occurred, this is not just for the current, this is not for the immediate impact. It is going to keep on happening quarter on quarter basis, not only for Bata but for other industries or other companies also. But Bata is impacted heavily because उनको royalty भी pay करनी पड़ती है, and obviously the rupee which has declined, the declining rupee value is making a big impact on Bata because they have to pay a little bit more. They are paying in rupees and it is getting converted in dollar. So that is why royalty is going a bit higher comparatively to the previous earnings and how much they used to share to the parent company. So that is it. And plus, there are other things also which Bata sometimes import due to manufacturing requirements, and that is why these are the two major things which are impacting the revenues and profit of the company. And to conclude the news, Hey, Anula, you told 3 times and. And is only spoken when you end the sentences. okay, I'll make sure Concentrate on that. Yes. Yeah. So to conclude the news, I just wanted to conclude it with the profit numbers will keep on being impacted due to the current rupees and market scenario, and if the import import duties are getting heavy or rupees declining, so this will impact the share price of the Bata. Yeah. नहीं ऐसा share price नहीं होता. We only talk about fundamentals. Okay. Company It will value. impact the it will impact the profitability. It will impact the margins. You don't talk about the prices. Okay. Okay. Achha. Now when you presented it first when you were presenting, you were just reading. So make it paragraph. So next time, second year you present was perfect. So how you present that Bata profit decline? So you obviously, if your heading was decline in profit, I need to have the reasons. You said the first reason was basically because of the VRS. Second, you can say like the second is because of the import duty, import cost. Third is due to royalty. This you can mention while speaking, writing, but while speaking. So as a listener, I understood that there are 3 points that the Bata's profit was impacted. Got it? Got it. So this is how you present it. Now this you missed out. Now the company has approval VRS workers in Bata unit. Company has rolled out a similar scheme for manufacturing unit. Okay. This you can add. The company has also rolled out a similar scheme for manufacturing plants. ठीक है, fine. हो गया. तीन ही पॉइंट है.
There are only 3 points Yes. in the news. So why it is taking time for you to present it? तो ये तुमको ध्यान रखना कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. Okay. Three things should be the things that you have presented me should be there in your newsletters. वैसा ही न्यूज़लेटर लिखो कि मुझे ये पैराग्राफ प्रेजेंट करना है, सेकंड थर्ड. So it becomes easy for you to present the news. Okay. Okay. एंड जो भी प्रेजेंट करना है राइट इट. ऐसा मत करो कि पूरा लिख दो फिर उसमें से पढ़ के ट्राई टू प्रेजेंट इट. इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. जो तुमने एंड 3 बार बोला बिकॉज यू डिडंट नो वेयर टू स्टॉप. Yes. तुमको पता था अगर पहले से 3 पॉइंट बोलने हैं तो फर्स्ट इज वीआरएस, सेकंड इज इंपोर्ट, थर्ड इज द रॉयल्टी. देन यू टॉक एंड थर्ड. ओके ठीक है सर. फाइन. तो ये वर्क ऑन इट. ओके. ओके फाइन. तो इतना ही न्यूज था. या बाटा का इतना ही न्यूज था नहीं actually. था. हाँ वही इतना ही न्यूज था. तो वो जब तुमने स्टार्टिंग में जब प्रेजेंट कर रहे थे तुम रीड कर रहे थे सब कुछ. एक्चुअली समझे? मैंने मेरे दिमाग में सेंटेंस फॉर्म नहीं किए थे और रीडिंग पे हाँ पहले चली गई. इसकी वजह से वो करेक्ट कंफ्यूजन हो गया माइंड में और वो फिर पैनिक में आ गया. करेक्ट करेक्ट. हाँ ऐसा ही होता है. तो ठीक है. तो पहले तुम जो तुमको बोलना है ना वो पूरा लिख दो. इस पे लिख दो. मेरे ओके. मैसेज पे ही लिख दो कि मुझे ये ही बोलना है. फिर उसमें तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो थोड़ा सा. पैराग्राफ में तुम बोलो यहाँ से इम्प्रोवाइज करो, यहाँ से इम्प्रोवाइज नहीं होगा वो. ओके डन. या चैत्राली. Good afternoon, sir. So my news is about the real estate sector. It is from Economic Times Mumbai edition, page number 9. Yeah, go ahead. So the Indian real estate sector is facing a cost rise crisis. All the companies, all the builders are facing about 25% price hike in the construction cost. So this rise of cost is mainly because of the global tensions, because of which some important materials which are needed in the construction projects are not getting available easily. So the price is rising. Again, the labors are migrating, because of which the labors are not getting available. And again, the other raw materials like aluminum, steel, the prices are also increasing. So all these three important factors are contributing to the price rise of real estate sector. So the major impact of this will be the project viability, as companies will get lesser margins because of this cost rise. Again, and also the customers of these sectors, like the commercial projects or the residential projects, both the customers will face a price rise of around 5 to 6% in the in the purchase of real estate made by the customers. And if companies think of adopting new technology for these projects, then also the companies have to spend a huge amount of capital for these in technology upgradation, so which also need some time. So currently, if you consider all these factors, the real estate sector should be on the bearish side. The stock price should Stock pricing. We don't fall. talk about stock price. We don't talk about Okay, stock price. so We only talk about it the will revenues might decline. so it will cause damage to the profits of this company. And if this scenario is for a long term, like if it is getting for more than 6 to 12 months, then it will cause a damage to not only to real estate sector, but also the other sectors which are related to that. Okay. Yes, So, thank you. but we want stocks, certainly in this. The stocks will impact it. Okay, So अभी it is. the real estate stocks I searched was the Lodha Group, Oberoi, and DLF. So if Godrej Properties also, so all these stocks will be getting impacted because of this. So when you say impacted, so you have to see whether this is happening or not. That is why you have to make that market tracker. So Yeah. is the reality sector tracking? What is happening in the reality sector? Is it down? Yesterday, I think it was down. Right. It is because of Yes. this news. So that is you have to relate it. Yes, sir. That's all. See, I was tracking the market tracker and I saw reality sector was down because of this news. Yes, sir. Okay, got it. Shobit? Yes, sir. Yeah, sure. Sir, before I go ahead, I just want to tell you
The news that I am about to share is about Indigo, and we have already shared. Okay. So, would you like me to Yeah, go go ahead. ahead? Yes, go ahead. Okay. So, so my news is about Indigo that's cutting up 12% flights due to rising fuel prices. Indigo is India's biggest domestic airlines with 64% market share. And during the month of June and July 2026, it plans to cut 10 to 12% of its daily flights due to the rising fuel price. And in the past few months, it has been between 150 USD to 200 USD. Though the government of India has absorbed around 75% of increase in the jet fuels, uh, but the executive says that the cost is still rising beyond the sustainable level. And it gets even tougher because of depreciating INR against USD, and today stands around 96.15. Uh, Talking about its competitor like Air India and its low cost on Air India Express that controls 27% of India's domestic aviation market. They also plan about operating 20% fewer flights during the month of June and July. And both of them, Indigo, Air India and Air India Express, they account for 90 plus percentage of India's domestic aviation market. So it signals that the fare prices in the coming months they are to rise. So, No, we don't talk about share prices. the share price for Indigo Airlines that goes by the name Interglobe Aviation Limited on NSE. Its closing price on 27th May was 4,750, 4,570, sorry. Okay. No, so fine, Shobit, but you have to be specific about the industry, which industry will impact. So you have to come on the hotel industry, how I told you to link those news. It is never about the same news. It is always, the news are always linked. Yes, sir. Fine. And the We'll try. presentation should be a bit small. It is being, too much. Presentation, you are telling it too much. You have to make it 4 paragraphs. That's it. What are the important 4 paragraphs you think I should know? Mhm. Okay. Okay, Price sir. have increased, fights have cut, capacity have decreased. That's it. Done. Okay, 30 seconds news. Not more than that. sure. Okay. Yeah. Fair enough. Yeah, Mukesh. The Shantanu hai. Shantanu, okay, present. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Mine is related to the EV penetration, and I think Niranjan already shared it. I Mhm. just add on it. In that, globally, 23 countries and the European Union crossed 10% EV penetration, ahead of India. The main reason other countries are ahead include a strong government incentive, better charging infrastructure, lower EV ownership cost, and availability of affordable electric vehicle. And reason behind the India lower penetration. India's biggest challenge is weak charging infrastructure. In that, the India had only 88,000 public charging points in 2000. Shantanu, your Yes, sir. English is not up to the mark, okay? And thought. So why don't you tell AI to make your speech and just read that? Whatever Sir, news you have written, just tell AI that I want to present this. Please write me a teleprompter script. Okay, teleprompter script. I have to tell this to my manager. Give me a proper sentences. Your sentences are missing. In that, there is no stop in between. You are not moving on from one paragraph to another paragraph. Oh, that is an sir, English problem. That is an English problem. yeah, sir. I make a script, but Niranjan said everything. That's why I just No, it's said fine. a No? new point. So that's what. Even you're selling new point, your English is not proper. You have ChatGPT now. You tell them because you are not able to make sentences on the go. Okay, I understand. Okay, it is a problem. I can understand. But now tell ChatGPT to make it.
Because if you stop so much, then there is no point listening to it. The English should be proper. If you cannot make sentences, so see Chandra, it is how it is. If you don't know something, don't try to improvise it. First, try to learn things. Keep it simple. Because this is not the point. No, you improvise something. First, learn the basics and then try to improvise. Okay. So tell your chat GPT to and just read that. Just read that. I'm okay with that. I can understand. Okay. Okay. Fine. Can I continue, sir? Yeah, continue. Yeah. India had only 88,000 public charging points in 2025, while the global total stood at 7 million. To improve EV adoption, India's PM eDrive scheme approved 5,000 new public EV charging with the 5 billion support, and the Tata Motors aims to expand charging points to 400,000 by 2027. The government has also extended the PM eDrive scheme till March 2028. And when we see the key beneficiary in the EV expansion, in that the Tata Motors and Mahindra is they are most contribute in that, approx 65% market share, and also the Maruti Suzuki is newly enter in the EV market from they launched their first model in February, and in April, just in 3 months, they captured 5.3% market share because of their brand trust and India's largest dealership in across the India, and also the VinFast is capturing 5.2% market share with the help of VF6 and VF7. They 2%. are How much is it? both 2%. 5.2%. 5%. Okay. Yeah, and with the Maruti Suzuki and VinFast, they are pressurized market share of Tata Motors and JSW. They're both Tata Motors and JSW both combined shares fall from 68.3% to 58.1%. And overall, the conclusion is the India's lower 4% EV penetration shows a huge future growth potential, and better charging infrastructure and along with the government support can significantly accelerate the EV adoption in the coming years. Fine. Fine. Good one. Chandra, just focus on English now. Okay. News was perfect. Okay. Yeah. Yeah, Mukesh. Sorry. Yes, sir. I'll share Yeah, the let's screen. let's- yeah. Yeah. Hope the screen is visible. Yeah, it's visible. Yeah. So good morning, everyone. Good morning, sir. So today I'll be giving the Q4 FY26 TVS Motors conference call update. So I'll start with TVS Motor Q4 FY26 revenue grew 151 billion, 30% year on year, and recorded a volume of 1.6 million units, growth of 28% year on year. The company's automotive vehicle. Thanks. Mukesh. I Yes, said sir. no percentage first and then the volume. Recorded. See, I will tell you how it works. Okay. TVS Motors. See, I'll tell you why I'm telling this. Okay. TVS Motors reported a revenue growth of 30% to Okay. 1.15 billion, 151 billion, and recorded a volume growth of 28% year on year to 1.6 million. Now, Okay. what happened when I read this? 30% revenue and 28% volume growth. See, if the revenue is growing by 30%, volume should also have grown by 30%. But Correct. if the volume is not grown, it means that the average realization has declined. Yes. Yes. This is how, that is why I tell you, percentage first, then the numbers. Okay. Okay. So while reading, I understood that realization has declined. Understood. Got it. Revenue is Yes. growing 30, and the volume should also grow by 30%. Yes. Understood. Right. And if the volume is growing more than that, so I understood, okay, realization has increased. And even you will understand that while presenting it. So you know that what I'm expecting from you. That now I expect that what happened in the product part, that why the realization declined. Okay. Okay. Got it. Got it. Yeah. 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 Go ahead.
So the company's automotive vehicle and part segment contribute roughly 88% of the total revenue and reported a strong growth of 35% year on year to 132 billion in Q4 FY26, while the financial service segment contributes the remaining share and registered a growth of 12% year on year to 19 billion. Within the automotive segment, the scooter, including the e-scooter, which accounts for 42% share, records the highest growth, with the volume raising 23% year on year to 660,000 units. E-scooters, which accounts roughly 7% share, grew sharply by 51% year on year to 115,000 units. The company's full year EV penetration increased close to 7% mark compared to 6% last year. The company expects to cross the run rate of 50,000 units from the current 40,000 units per month in FY27. Coming to the motorcycles, the volume increased 23% year on year to 693,000 units. Premium bikes such as your Ronin and RR310 saw year-on-year growth greater than 60%, while moped grew 28% to 146,000 units. And in the three-wheeler segment, reported the strongest growth across the category, with volume raising 62% year-on-year to 60,000 units. Company launched the TVS King Cargo Heavy Duty CNG, and it witnessed strong initial demand and Vahan share increase as well. Okay. So this, the King can be taught in part of three-wheelers. No? Three-wheelers do 60%. And should be Yes, a part of that. yes. The three-wheeler share is actually very less. So most of the No, but King is a companies, part of three-wheelers, no? yes, it's That's a why. part of three-wheeler CNG. That's why you should talk in three-wheelers segments. So I told in the three-wheeler segment, reported the 62% growth overall segment, and then afterwards I included, I told you the TVS King Cargo. Okay, sorry, I missed it. Okay. Yeah. Now coming to exports business. So it recorded the highest ever volume of 1.6 million, a 33% growth year on year in FY26 due to very high demand in Africa, Asia, and Latin America. Revenue for Q4 in exports stood at rupees 30 billion, despite war-related disruptions affecting container availability, leading to time increase by 15%. That is roughly of 1 week to 10 days. The company continues to see very high demand. And coming to the TVS credit segment, they registered an AUM increase of 15% in FY26 to 206 billion due to loan disbursed to over 5.3 million new customers, and the total customer base now stands at 240 million. EBITDA in Q4 jumped 14% year on year to 22 billion, and EBITDA margins declined 2% to 14.5%, mainly due to 290 bips increase in raw material cost and was offset by 80 bips decline in other expense. The company witnessed raw material cost inflation of 3 to 5% of revenue, mainly due to tier 2 labor constraints and raw material availability, for which the company had already passed on 35% of the cost inflation through price hike. Management expects supply normalization by end of May, and one can see the remaining price hike in select models going forward. So management expects overall industry see a single digit growth, and TVS scooters segment and the premium and super premium portfolio like your Apache, Ronin and the Norton Pipeline despite inflationary and fuel pressure to perform well. Company is expected to do a significant capex of 35 billion within the 12 months, increasing the capacity to another 1.5 million to 83 million to meet the rising demand. The company plans to launch new products under the Norton brand, which would be your Max, Man X, Man XR, Atlas GT. Yeah, Atlas GT, which is likely to roll out starting from Q2 FY27. TVS signed a joint. You can also write the pricing there. Know what are the pricing of this product? Okay. But this they have not mentioned anything, so they will be launching like
at the Q2 of Ah, FY27. So they no, have not mentioned anything as such. They didn't disclose no, so okay, so if they're not disclosed, so you know where are they positioned? Okay, in then the you say premium premium bike. segment. Okay. So what is the premium? What is the pricing of the approximate pricing? Okay. Okay. Okay, got it. Understood. Because Yeah. now I don't know what does premium means. If Okay. I'm a Okay. layman, I don't Uh-huh. know whether it is 1 lakh, 5 lakh, or 10 lakhs. Okay. Okay, Okay. got it. Understood. So this should be around the range of 3, 4 lakhs, 5, 10 lakhs. Okay. Okay, Okay. okay, got it. So overall demand in its premium portfolio, scooters and export is likely to contribute further for revenue for TVS going forward in FY27. Yeah, that's it. Okay, fine. Fair enough. I think it is good. One thing is that conclusion is to be written at the down. Okay. And Mukesh, and below also, I have told you to make the tables of P&L, balance sheet, and cash flows and ratios. You see, that Yeah, is yeah. someone The has made that. forecasted 2 years Yeah, one. forecasted 2 years. Yes, you have Okay. to make it. Okay. And you Okay. have to also write the valuation, how I've written in my basic valuation. So in the Excel sheet, I've done the valuation for EV EBITDA and price to earnings. So then that I will add that. That will be fine, right? Yes. So, in the video, just see, I have it in my this videos also. Okay. Conference call writing, I have read that at current market price of this, the company is trading at a PE of etc., and we believe that the volume, this value. So we believe that going ahead, Hero MotoCorp, sorry, TVS Motors will have a good run because of this launches, etc. That should be Okay. come on your front page Okay. before you start conference call highlights. Okay. Okay. Okay, before you start conference call highlights, this should be a part of it. Understood. Okay, got it? Yeah. I will make those Yeah, changes just and make add the them. changes. Yeah. Add them and start making hotels and FMCG. Start making an FMCGs now. Okay. FMCG. Okay. Yeah. Because I have made all the financial model for hotels. I thought that I'll No, that is also continue. fine. Yeah, you have made. Okay. Sorry, hotels. So how is it? Auto, hotels, and FMCG. This is Okay. how Okay. you need to do it. This is how you prove that you are experienced analyst. Yes, sir. Okay. Okay. Yeah, one more thing. So now the Q4 is about to come to an end. So and all the conference calls have almost done. Then, So just going forward, I will prepare the report from my end, but do I need to present it? yeah, present it sometimes better. Okay. But once you have done, let me know. We can present it after the call. This is just Okay. between you and me, you and me Okay. types. Okay, you Okay. can Okay. wait for the Got better, it. na? You will improve on it. Yeah. Yeah. That's the Okay. reason I asked because No, the present. conference calls are about to come to an end. So and because Yeah. in between 1 week I was held up with the other work Yeah. that you gave. So that's the reason I So asked. models report. That is how you work. Okay. Okay. Yeah. And Got then it. now you have to find one company out of it that you will like to say what is your top pick. Pitch. Okay. Yeah. So that you have to pitch. So In for that you need auto to have and a auto, FMCG, and hotel. okay. Okay. So then you have to prepare a report, most how you made for auto, the industry report. So industry report, hotel, sorry. And then Yeah. hotel, you have to add the specific industry report. Specific Okay. means if you're talking about Leela, so you have to be specific about the premium luxury, Yes. not Yes. the normal hotels. Okay, Understood. something like that. Okay. But Okay. if you're talking about two-wheelers, so you don't talk about the four-wheeler automobile sector. You specifically talk about two-wheelers, and that too Electric in part. two-wheeler, which electric or maybe premium, which you want to Premium talk about. segment. Got it. Got it. That is how you make a industrial pitch, sir. Sorry, Yeah. stock pitch. Understood, sir. Got it? Yeah. Yes, sir. Fine. Yeah. Thank you, sir. Okay. Yeah. Welcome, guys. Thank you. Thank you, everyone. Have a nice day. See you tomorrow. Thank you, Thank sir. you, everyone. Thank you.